plants in order to address the issue of air pollution due to farm stubble burning and to reduce the carbon footprints of thermal power plants. In order to promote use of biomass pellets, all the power utilities have been advised to increase the use of biomass pellets for more than 5%, primarily of agro residue along with coal. The government is also encouraging the establishment of decentralized pellet manufacturing units and also trying to overcome the constraints in the supply chain of biomass pellets and agro residue and its transport up to the power plants. Many generating companies like HPGCL, NTPC, and other power generating units have been placing tenders for procurement of biomass pellets. So there is a lot of business opportunities in this sector for the pellet manufacturers, and they have to come forward to play a big role in this national mission of biomass utilization. I thank all the pellet manufacturers for taking out time to be here on this occasion, and I thank all the members from the Mission Directorate and our Director General for coming over and addressing the participants. Thank you all, and welcome to NPTI Nagpur once again. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Mr. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Good morning to all. It is a proud privilege moment for NPTI Nagpur also to associate with this mission of biomass in thermal power plants especially. First of all, I would like to welcome our respected Director General, Dr. Tripta Thakur, today's faculty as well as eminent scientists, principal scientists, Sri S.K. Suklaji and his team members from Central Institute of Research on Cotton Technology, Sri Sushil Kumar Arjaria ji, Deputy Chief Engineer, Mission Biomass, Sri Sudeep Nag ji, Mission Director and ED NTPC, Madhu Ma'am, Principal Director NPTI, our Sanjay Singh, the Course Coordinator, all the Directorate, Mission Directorate officers, staff members of the NPTI faculty members. I welcome again to this biomass one-day capacity building program, and this is one first of its kind in NPTI Nagpur after this mission has been formed, and all the pellet manufacturers are available today. I welcome, and they are the most important aspects of this program, so I wholeheartedly welcome all of them and all the stakeholders of this biomass mission, and hope this mission will work not only in the use of the biomass pellets in the power plant, also they will be contributing in the clean technology, clean air technology of the India. So hope their contribution will be immense, because everybody is aware of that around 750 million tons of biomass is available in India yearly, and out of that more than 230 million metric tons per year is surplus and get wasted, and the stubbles are being burned. And as per a report, around 48% of the pollution in Delhi NCR itself contributes by the burning of the stubble in especially Punjab and Haryana. So that is really a matter of worry also, and because of that, this national mission on use of biomass in coal-based thermal power plants has been started, and hope this will not only improve the efficiency, because around 5 to 10% of the coal blending is aggregated to the use of along with the coal, and that too specially for the agro residues, and also to take up this mission activity on the research and development also in the boiler design to handle the higher amount of silica alkalis in the biomass pellets. So that is also one major thing, so which we will be discussing, and hope the pellet manufacturers will be immensely benefited out of this. And regulatory issues, although biomass co-firing, that is also one important aspect which gives the regulatory board can also take up these issues. And the mission is headed by
the Secretary Power himself, and the NTPC, MNRE, CA, and all other stakeholders are also actively participating, and there have been more than 5 subgroups are working on this. And these pellet manufacturers, so biomass produced and basically for the agro-based system, and they will encourage. So this will be a great nation-building program, and hope the NPTI, which has been taken up this program, today's one-day capacity building, surely will give the awareness among all the manufacturers. And they also get their confidence. Their markets also, so they can both have their livelihood. They can also make a business out of that residue, agro residue, as well as they can contribute in the, as I told, in the air pollution and clean air technology. So hope with this I welcome once again, and thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Sri Sudeep Nag, sir. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning. First of all, I would like to welcome all the participants, especially the pellet manufacturers and the suppliers who have taken all the trouble to come to the NPTI Nagpur and attend this program. My sincere appreciation also to NPTI team led by its principal director, Mr. Ranjan Misra, Dr. Ranjan Misra, I'm sorry. So for conducting this program, Dr. Tripta Thakur, Director General NPTI, who is present in this program through VC, Dr. Monju Ma'am, Principal Director, NPTI, Dr. R.K. Misra, Principal Director, NPTI WR, Dr. S.K. Shukla, Principal Scientist and Officer in charge of ICAR. Today's faculty, Sri Amit Agarwal, Assistant Professor, LIT Nagpur, Sri Jogesh, Director, Sanjeevani Agro Machinery. Ladies and gentlemen, it's a privilege for me on behalf of National Mission on Use of Biomass in Thermal Power Plants to be present in this meeting and addressing you all. Today, I welcome all of you to be a part of India's target of green energy transition through National Mission on Use of Biomass in Thermal Power Plants, where our mission is going to work together with you all. And this one-day capacity building program of pellet manufacturing units will provide all of us a platform to share the ideas and resolve the concerns. As you know, that the biomass-based electricity or energy capacity is one of the cleanest sources of electricity production, as it not only reduces the open field burning of agro residue, therefore reducing the pollution level, and also replaces some of the conventional thermal energy like coal through crow firing during its power production in thermal power plants. With the enormous availability of surplus agro residue, as just have been rightly told by Dr. Misra, the capacity of power which we can produce through this agro residue is enormous. And today, the country has an active and growing biomass-based electricity sector, which is also being supported by the government, the regulators. Government of India, its Ministry of Power, has already taken a proactive action in this direction, as this national mission for use of biomass in thermal power plants has already been formed in the month of July 21. As you all know, that this mission is actively working in different areas of biomass co-firing, like increasing the level of co-firing from the present 5% level to a higher level, so that the largest share of carbon neutral power generation can be achieved from the thermal power plants. To look into the R&D activities in the boiler design, to handle the higher amount of
silica, and alkali in the biomass, overcoming the constraints of supply chain in the biomass pellet agro residue business and its transportation to the power plant doorstep, and also taking up the regulatory issues of biomass co-firing. To encourage the use of agro residue, that is the pellets, the Ministry of Power long back in November 2017 had issued a policy of biomass co-firing in thermal power plants. Now, to further promote the biomass co-firing in thermal power plants, a modified policy has been issued by Ministry of Power on 8th October 2021, which is readily available in the Ministry of Power site, which mandates the co-firing of biomass in thermal power plants. This new policy is providing generators, pellet manufacturers, biomass aggregators, and farmers opportunity to work towards a common objective. What is that objective? Is to use agro residue, generation of income, employment, and overall taking up a noble job in keeping the environment healthy and fresh. The power plants have been instructed to take up all the steps to ensure that the co-firing of biomass starts at the earliest. Ministry of Power has already advised through its policy each state government, each public sector or private utilities to issue long-term tenders for biomass projects in their state so that a stable stable infrastructure can be set up by the pellet manufacturers, and the steady supply chain is developed between the pellet manufacturers and the power plant operators. Today, the NCR plants and also different NTPC plants have already started biomass co-firing. Till date, more than 55,000 tons of biomass pellet have been fired in the power stations. Our national mission is trying to act like a bridge between the farmers, suppliers, and manufacturers for interaction and sharing of knowledge among the suppliers and also the industry to make best use of biomass and to keep functioning of supply chain to carry forward the energy security as well as the livelihood of the farmers. We are actively working towards the resolving issues of biomass pellet suppliers. A separate meeting has already been conducted under the Ministry of Power in the month of November 21 to discuss the issue of supply chain of biomass pellets and the difficulties they are facing in their business. And a lot of those issues are being taken care of. The mission has also organized farmers awareness campaign in the month of October, 2 numbers of farmers awareness campaign to sensitize them towards the ill effects of stubble burning and how to convert it to a source of income. This capacity building program for pellet manufacturers, one capacity building program has already been conducted in the month of November in NPTI Badarpur, and this is the second in line where we are going to interact with you all. You will find that different MSME policies and schemes are there to facilitate such projects, along with various other central and state government schemes, which can help you to develop or to improve your business related to the biomass. As this COVID-19 pandemic have long-term implications on energy supply, energy industry and the supply chain, so we can take this opportunity to reaffirm to work together to carry forward this objective of use of biomass in the power plants to build a sustainable agriculture value chain which will meet the energy security and also the clean energy transition. Although today it appears that this pellet manufacturing is a small business, but considering the enormous opportunity, enormous availability of agro residue, surplus agro residue, I mean to say, in the country, it has all the potential to be a big business in the future. I request all the manufacturers and service providers who are present here to act and achieve this, its real potential.
At the end, again, I would like to thank all the participants for joining this program, and I wish that this program will be a lively one and there will be effective and participative session throughout the day. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Sushil, sir. आवाज आ नहीं रही मिश्रा जी। संजय जी देखो। हेलो अर्जुन साहब का हेलो 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 आ रही है? अभी आ रही। अच्छा। सचिन एक बार देख लो। ठीक है, ठीक। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि पॉल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है अभी, खासतौर से जो हमारे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा उधर में काफ़ी पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे पराली जलाई जाती है। यहाँ तो तब भी सुबह देखने से एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वहाँ पे बहुत ख़राब हाल है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अपने से इनिशिएटिव लेके एक मिशन बनाया, यूज ऑफ बायोमास इन पावर प्लांट्स में। उन्होंने मिनिस्ट्री पावर ने इनिशिएटिव लेके उसको मिशन बना के कि 5% बायोमास हम लोग पावर प्लांट में यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमको एक तो कार्बन क्रेडिट मिलेगा, कोल कम लगेगा, और दूसरा जो बायोमास जो ये लोग किसान लोग जला देते थे पंजाब और हरियाणा में, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। बर्निंग आपको जो ओपन फील्ड में कर रहे हैं और जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ओपन फील्ड में क्या होता है, एक साथ जो किसान लोग रहते हैं वो पूरा बर्निंग कर देते हैं, एक साथ पूरा जला देते हैं, क्योंकि उनको तुरंत फसल के लिए जमीन रेडी चाहिए। और मिशन बायोमास इसके लिए उन्होंने कहा कि आप पैलेट्स बनाइए, पैलेट्स बना के आप डिफरेंट पावर प्लांट्स में दीजिए, और डिफरेंट पावर प्लांट्स 5% मैक्सिमम अभी 5% का कहा है, फिर बाद में इसको प्रोग्रेसिवली बढ़ाता जाएगा। तो 5% ये लेके और पावर प्लांट जो उसको फायरिंग करेंगे, को फायरिंग करेंगे, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इससे क्या फायदे हैं, एक तो आपकी जो जमीन है वो उपजाऊ रहेगी, जलने से उसमें उसके खत्म हो जाते हैं, और दूसरा होगा किसानों को प्रॉफिट होगा, कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगा। तो इसके लिए अभी क्या है, जब मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पॉलिसी निकाल दी, रिवाइज पॉलिसी, तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि आप लोगों के लिए, पैलेट मैन्युफैक्चर के लिए इसको बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेंट्रल जो भी हैं उन सारे पावर प्लांट्स के लिए 5% अनिवार्य कर दिया कि आपको 5% पैलेट जलाना है, बायोमास से बना हुआ। तो इससे आपको अब कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ाना है। और दूसरा हुआ काम, ये कैपेसिटी बढ़ा दी और इसके साथ ही आपको किसानों के लिए भी बढ़ गया। तो जो ये बायोमास का मिशन बनाया है, ये मिशन बायोमास बनाया है कि हमारे आपके बीच में, मतलब पैलेट मैन्युफैक्चरर और किसान, और पैलेट मैन्युफैक्चरर और जनरेटिंग यूनिट, इसके बीच में लिंक हो, मतलब कोऑर्डिनेशन करने वाला एक कोई एजेंसी हो जो कोऑर्डिनेट कर सके किसान को पैलेट मैन्युफैक्चरर से, पैलेट मैन्युफैक्चरर को जनरेटिंग स्टेशन से। तो वो काम हम लोग बायोमास मिशन के अंतर्गत करते हैं। आपको हम लोग अभी एनपीटीआई भी उसमें एक मेंबर है, एनपीटीआई वहाँ पे किसानों के लेके 2 प्रोग्राम किया था, और उसके बाद अभी पैलेट मैन्युफैक्चरर लेके प्रोग्राम किया है। तो इस तरह से हम लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। ये अभी नया है तो थोड़ा बिल्टअप होने में टाइम लग रहा है, लेकिन इन द आने वाले समय में ये बहुत अच्छा काम करेगा। और इसी के मतलब हम यही अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पे जितने लोग पैलेट मैन्युफैक्चरर हैं वो अपना कैपेसिटी बढ़ाएं,
और हम लोगों को पावर प्लांट्स को सप्लाई करें, और इससे आपको किसानों को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा, क्योंकि हमारा कार्बन क्रेडिट घटेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज के सेशन में एक अच्छा डिस्कशन करके हम लोग एक अच्छे उस पर आएंगे। और कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है तो हम लोगों की वेबसाइट अभी लॉन्च होने वाली है, वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। और नहीं तो हम लोगों ने एक ये दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है बायोमास मिशन का, उस पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर एस.के. शुक्ला। इसमें आवाज आएगी? सबको हमारा सप्रेम नमस्कार। ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए एनपीटीआई के सीनियर ऑफिसर्स, डीजी, प्रिंसिपल ऑफिसर्स एंड ऑल, और यहाँ पे उपस्थित हमारे कलीग्स, सीनियर कलीग्स, और बहुत ही जो है प्रसिद्ध पैलेट मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग पैलेट और ब्रिकेट के बारे में बहुत दिनों से कार्य करते आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा उसका परिचय देना चाहूँगा कि लगभग जो है 2005 से हम लोग ब्रिकेट और पैलेट मैन्युफैक्चरिंग पे काम करते आ रहे हैं, और काम करना बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी रही है। जैसे थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो बीच बीच में खराश आती रहती है। हुआ क्या कि जैसे 2005 में हम लोगों ने देखा कि जो भी बायोमास है उसमें कॉटन स्टॉक जो लगभग 30 मिलियन टन अवेलेबल है इंडिया में, ज़्यादातर जला दिया जाता है। तो उसको उपयोग करने के लिए कौन सी चीज़ें क्या किया जाए, तो हम लोगों ने देखा कि इसका बहुत अच्छा ब्रिकेट और पैलेट बनाया जा सकता है। तो शुरू में हम लोग जो है पूरा ब्रिकेट में स्विच ओवर किए। उस समय कुछ हमारे परिचित जो लोग थे, जो हम लोग कांटेक्ट करके आए कि हम लोग किसी तरीके से इसको ब्रिकेट में कन्वर्ट किया जाए। तो उसमें लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों ने उसका लॉजिस्टिक डेवलप किया। लॉजिस्टिक डेवलप करके लोगों को प्रमोट किया गया, मोटिवेट किया गया कि आप आइए, किसी तरीके से ब्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालिए। तो ब्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2-4 लोगों ने डाला, और शुरू में काफ़ी अच्छा चला और काफ़ी अच्छा लोगों को उसका प्राइस भी मिल रहा था। लेकिन इंडिया में एक समस्या ऐसी रही है कि जैसे जैसे जो है एक तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो बहुत सारे लोग उसमें जुड़ जाते हैं। तो लगभग जो है 2010, 11, 12 के आसपास ऐसा आया कि बहुत सारे लोग एक तरीके से ब्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दिए। तो इतने सारे ब्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक साथ डाले गए, तो लोगों ने क्या किया, थ्रो अवे प्राइसेस में फिर ब्रिकेट को सेल करना शुरू किया। तो उससे उनको प्रॉफिट नहीं आ रहा था, तो उसमें क्या किया, एडल्ट्रेशन चालू कर दिया। जो मटेरियल जो है जैसे सॉइल पार्टिकल, ये सब चीज़ें डाला, या जिस मटेरियल में बहुत सारा एस कंटेंट था वो चीज़ें डाला। तो उसमें हुआ क्या कि बहुत सारे जो एंड यूजर थे वो लोग क्या किए कि एक बार जो कोल से वो किसी तरीके से ब्रिकेट में या बायोमास अदर प्रोडक्ट्स में आए हुए थे, फिर से उनको फोर्सफुली जो है स्विच ओवर होना पड़ा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि कई सारे जो है ब्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नागपुर या आसपास में फोर्सफुली बंद हो गए, क्योंकि उनका जो परचेज करने का जो डिमांड कम हो गई। तो धीरे धीरे देखा गया कि जो पैलेट मैन्युफैक्चरिंग था उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप था, लेकिन समस्या ऐसी थी कि जो बड़े बड़े बायर थे वो बहुत ही कम रेट में प्रोक्योर करते थे। जैसे हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ा बायर इस समय हल्दीराम यहाँ था, हल्दीराम फूड पार्क में था, लगभग 50 से 60 टन डेली होता था। और जो छोटे छोटे बायर थे उनका रिक्वायरमेंट इतना कम है कि फिर उनको एक तरीके से सप्लाई करने में प्रॉफिट मार्जिन नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से समस्याएं आती रही धीरे धीरे,
लेकिन जब से मिशन एक तरीके से पावर मिनिस्ट्री ने 2017 में उनका एक तरीके से उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है इसको को फायरिंग में लाएंगे, तो इसमें काफ़ी अच्छा ट्रेंड आया हुआ है। और अभी कई सारे मैन्युफैक्चरर्स उसमें नए नए जुड़ रहे हैं और बायोमास का भी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले समय में ऐसा लगता है कि जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूं कि मंडियों में जिस तरह से अनाज आता है उस तरीके से बायोमास आना चाहिए। तो बायोमास आएगा तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले फार्मर को बेनिफिट होगा। जो फार्मर बर्न कर रहा है वो बर्न करके कुछ न कुछ उसका प्रॉफिट होगा। सेकंड क्या होगा कि जो पोल्यूशन हो रहा है पोल्यूशन नहीं होगा। थर्ड क्या होगा कि जो हमारा सॉइल जो खराब हो रही है बर्निंग से, उससे जो है निजात मिलेगी। तो ये सब चीज़ें कई बेनिफिट हैं। और इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रूरल एरियाज में हो रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो रूरल मासेस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयड है, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। हम लोगों ने खुद जो है लगभग 2 साल पहले 5 गाँव में मॉडल रूप से हमने बायोमास कलेक्ट कराया था। अपने खुद की हम लोग, हमारे पास जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी मैन्युफैक्चरर आते हैं, हम लोग उनको देते रहते हैं कि आप ले जाइए, यूज करिए, हमारे यहाँ गवर्नमेंट में रख के क्या होगा। तो इस तरीके से जब हम लोगों ने 5 गांव में करके देखा तो एक गांव में जो है 10 लाख रुपीस का इनकम इंक्रीज हुआ। लगभग 5 गांव में 50 लाख का इनकम जो है जनरेट हुआ था बायोमास कलेक्शन सप्लाई करने का। और इसके बाद अगर उनका देखा जाए कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ या जो मैन्युफैक्चरर का जो बेनिफिट हुआ, उसका सबका तो अलग ही हो गया। तो स्कोप बहुत ज्यादा है इसमें है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसे हैं कि जैसे मैं देख रहा था कि जो स्टैंडर्ड बनाए गए हमारे, स्टैंडर्ड में कहीं कहीं हम लोग बहुत ही रिलक्टेंट हैं, कहीं कहीं हम लोग बहुत हार्श हैं। जैसे देखा जाए कि सबसे पहले कि उसमें आईएस वगैरह बहुत ही रिलक्टेंट रखा गया है, तो मैं मान रहा हूँ। लेकिन जहाँ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आता है उसमें ऐसा बताया गया कि 100% 3 mm होना चाहिए और 1 mm की भी गारंटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, पार्टिकल साइज बहुत बारीक करके रखना है हैमर मिल से, तब जाके आप पैलेट बनाइए। जब इतना कोई बारीक कर लिया तो 25 mm का पैलेट क्यों बनाएगा वो, फिर 6 mm 8 mm का पैलेट बनाएगा। तो इस तरीके से जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड है, इन दोनों में कोहेरेंस करके अगर रखा जाएगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा। तो अभी जो मिशन लॉन्च हुआ है, मिशन लॉन्च से निश्चित रूप से सारे स्टेक होल्डर को फायदा होगा और एक नई इंडस्ट्री डेवलप होगी। जो अभी तक जो हम लोग कॉटन प्रोसेसिंग में देखते थे, केवल कॉटन जो है रॉ कॉटन होता था, यार्न बनता था, लेकिन आगे चल के जो इसमें पैलेट वगैरह बनेंगे तो वो इंडस्ट्री इक्वली कैपेबल। और मेरा उम्मीद ये है कि जो कॉटन का जो वैल्यू एडिशन है उसमें बायोमास में भी उतना ही होगा जितना कॉटन के मेन प्रोडक्ट में होता है। तो अभी हम लोग काफी ज्यादा प्रेजेंटेशन भी है, उसमें भी भाग लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू शुक्ला सर, आपने काफ़ी डिस्कशन किया पैलेट से रिलेटेड और किस तरीके से हम लोग इसको अपने तरफ से टर्न किया जा सकता है। और ये डेवलपमेंट का प्रोसेस काफ़ी सालों पहले स्टार्ट हो गया था। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर तृप्ता ठाकुर मैडम। जी सभी को नमस्कार। नमस्ते आप मैडम। सभी लोगों का आज एनपीटीआई नागपुर परिसर में आप सभी का स्वागत है। एक दिन की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में, जो कि नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन थर्मल प्लांट के अंतर्गत हो रहा है, एग्जिस्टिंग पैलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। मैं स्वागत करना चाहूंगी इस विशेष रूप से उपस्थित श्री सुदीप नाग जी, मिशन डायरेक्टर एनईडी एनटीपीसी का, सुशील कुमार आचार्य जी, डिप्टी चीफ इंजीनियर मिशन बायोमास, एंड हमारे एक्सपर्ट जो आपके साथ अभी और जुड़ेंगे और बड़ी ही उन्होंने अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, श्री सुशील कुमार, श्री एसके शुक्ला जी, एंड श्री आरके मिश्रा जी, जो कि हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं एनपीटीआई नागपुर के, जो कि आज पूरे इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। साथ ही उपस्थित डॉक्टर मंजू मान, प्रिंसिपल डायरेक्टर एनपीटीआई कॉर्पोरेट ऑफिस फरीदाबाद। तो आज आप सभी का स्वागत है।
हमारा ये जो प्रोग्राम है वो मिशन डायरेक्टरेट जो स्थापित किया है बायोमास के लिए, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, उसका क्या उद्देश्य है और उसमें पैलेट मैन्युफैक्चरर किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो ये एक संवाद स्थापित करने के लिए ही आज का ये एक दिन का कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम रखा गया है। जैसे कि आप सभी अवगत हैं और सुदीप नाग जी ने भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन, नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास ये स्थापित किया है और स्पेशली इसका फोकस है कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में किस तरीके से हम इस बायोमास को का यूज कर सकते हैं। इससे इस मिशन के अंतर्गत 4 तरह के ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं कि किस तरीके से को फायरिंग में इस पैलेट का हम 5% तक इस्तेमाल पावर जनरेशन में कर सकते हैं और आने वाले भविष्य में हो सकता है 5% बढ़कर 10% भी हो जाए और साथ ही साथ जितने प्राइवेट लोग भी पावर जनरेशन कर रहे हैं कोल के द्वारा उसमें भी हो सकता है ये एक दिन जरूरी हो जाए। दूसरा मिशन है इसका कि जितनी R&D एक्टिविटीज हैं, बॉयलर डिजाइन से लेकर के या बायोमास पैलेट पर जितना R&D वर्क है वो भी ये मिशन लेकर के आएगा। साथ ही साथ जो एक सप्लाई चेन जिसका की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो पैलेट मैन्युफैक्चरर्स हैं और अंतिम कड़ी जो हमारे किसान भाई हैं, उन सबको कैसे सहयोग लाया जा सकता है और किस तरीके से एक परफेक्ट सप्लाई चेन जिसमें सभी लोगों का फायदा हो वो स्थापित की जा सकती है। ये तीसरा उद्देश्य है इस नेशनल मिशन का। और साथ ही साथ जो रेगुलेटरी इश्यूज भी आने वाले समय में बायोमास को फायरिंग को लेकर के आएंगे उस पर अध्ययन करना भी इसका मिशन है। तो इन 4 मेन ऑब्जेक्टिव के साथ इस मिशन की शुरुआत हुई है। मिशन की वेबसाइट बन चुकी है, इसके सब ग्रुप बन चुके हैं और एनटीपीसी जो है इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग में किसानों के साथ भी चर्चा कर चुकी है। पैलेट मैन्युफैक्चरर के साथ भी हमने बदरपुर में अभी एक प्रोग्राम किया था और आज हम नागपुर में फिर से पैलेट मैन्युफैक्चरर के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सरकार ने जो मिशन स्थापित किया है उसमें पैलेट मैन्युफैक्चरर्स क्या एडवांटेज उठा सकते हैं, आपकी समस्याओं को किस तरीके से इस मिशन के अंतर्गत सॉल्व किया जा सकता है और किस तरीके से हम परफेक्ट वैल्यू चेन बना सकते हैं, क्योंकि आप जो हैं वो सीधे किसानों से जुड़े हुए हैं। किसानों को ये बात सरकार बहुत समझा रही है, लेकिन जब तक एक उनके पास अच्छा वाइबल अल्टरनेटिव नहीं आता है किसान पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, आज हम तो फरीदाबाद में बैठे हैं और दिल्ली में बैठे हुए लोग भी देख रहे हैं कि पास के एरिया में पराली जलने से हमारी जो हवा है वो कितनी दूषित हो गई है। तो जिसका कि मतलब कोई सारे स्टैंडर्ड हम पार कर चुके हैं और एक जहरीली हवा जो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो अगर हम इस कार्य में आगे बढ़ते हैं तो ना सिर्फ हम पोल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग देंगे कि पराली ना जलाएं, तो इसका मोटो हम किसानों को दे सकते हैं कि अर्न, डू नॉट बर्न द पैडी स्टबल। सो दिस वे ऑफ अर्निंग, ये जब तक आप अच्छे से स्थापित नहीं करेंगे तब तक किसानों में ये आत्मविश्वास नहीं आएगा और वो जो उनके लिए सही और सरल तरीका लगता है कि इसको जला करके वो अपनी खेती को दूसरे रूप में दूसरे के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हम परंपरागत खेती देखें तो कहीं पर भी हमारे यहाँ पर इस तरह जलाने का विधान नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि धरती हमारी माँ है, उसको हम नहीं जलाते थे और उसमें क्या क्या हमारे जल रहा है। लेकिन चूंकि आज हम केमिकल बेस्ड खेती कर रहे हैं तो उतना ध्यान नहीं दिया जाता है और फिर से लगता है कि धरती की को फिर से हम बहुत सारे खाद डाल करके, बहुत सारे केमिकल डाल करके फिर से नई खेती के लिए तैयार कर देंगे, लेकिन ये कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। तो इस बात की अवेयरनेस के लिए तो ये जो काम है, ये जो पैलेट मैन्युफैक्चरर्स का आपका जो यूनिट है वो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका इस मिशन के लिए कर सकता है। अब जब जैसे कि सभी ने बताया, नाग साहब ने भी बताया कि 5% कंपलसरी है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में अगर 5% आपके पैलेट लेने के वो लिए तैयार हैं और सप्लाई चेन में अभी मिसमैनेज भी है,
तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है थर्मल पावर प्लांट की, उतने पैलेट की सप्लाई नहीं है। तो ऐसा बिजनेस जहां डिमांड है और सप्लाई नहीं है, तो वो एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। ये इस तरह की एक आपस में लिंक स्थापित हो जाए, इसी के लिए ये मिशन के अंतर्गत आज की एक वर्कशॉप रखी गई है। तो आप ना सिर्फ इस तरह से ना सिर्फ हमें पर्यावरण बचाने के लिए सहयोग दे सकते हैं, बल्कि जो हम जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, उसमें जब तक हमारे किसान भाइयों को अच्छा फायदा नहीं होता हर चीज में, तब तक हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती है। और हम देख रहे हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इसको अगर हम दूर कर सकते हैं, तो उसमें भी आप एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं बड़ी आशा करती हूँ, और बहुत अच्छे से शुक्ला जी ने बताया भी कि किस तरीके से ये थोड़ी थोड़ी चीजों में जो परेशानी आ रही है, और वो परेशानी को दूर बहुत अच्छे से इस मिशन के अंतर्गत किया जा सकता है। तो आप सभी का स्वागत है। आपके साथ पैलेट मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिशन का भी और एनपीटीआई का एक नया संबंध स्थापित होने जा रहा है, जो कि एक नया लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा। आपको कभी भी कोई भी तरह की टेक्नोलॉजिकल और किस तरह की भी हेल्प करने की आवश्यकता है, तो मिशन के लोग बहुत, और एनपीटीआई भी कैपेसिटी बिल्डिंग में आपके साथ है। हम लोग भी मिशन के एक पार्ट हैं ग्रुप में, और इसी कड़ी के अंतर्गत मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज पूरे दिन की जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में बहुत कुछ आप हमें बताते जाएंगे, और बहुत कुछ जो हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर शुक्ला जी और अमित अग्रवाल और योगेश, ये आपसे एक संवाद स्थापित करेंगे, और कुछ आप उनसे सीखेंगे, कुछ हम आपसे सीखेंगे, और इस तरीके से सभी मिलकर के जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो रेसिडुअल्स हैं उसको कैसे अर्न कर सकें, बर्न ना करें, उस समस्या पर आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे। अगेन मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब पैलेट मैन्युफैक्चरर्स अपना कीमती समय निकाल करके इस मिशन से जुड़े हैं और इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आए हैं। फिर से आपका एक बार स्वागत। Thank you so much, and I'm very sure that this one-day capacity building program is going to be a very fruitful discussions, and going to make a long-term relationship of all pallet manufacturing unit, which are going to play a very, very important role for achieving the goal of biomass in future. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you, madam. बहुत धन्यवाद मैडम। धर्माधिकारी सर। Thank you. I am very much thankful to all the pellet manufacturers which have gathered here for this one-day capacity building program. I am very much thankful to Sudeep Nag sir for providing the insight within the policy matters of Government of India in order to improve this existing pellet manufacturing units capacity. I am also very much thankful to Sushil Kumar Arjaria, the Deputy Chief Engineer, Mission Director Biomass, for coming here personally and guiding to have the success of this program. I am very much thankful to Dr. S.K. Shukla, who is the Principal Scientist and Officer in Charge of ICAR Nagpur, for providing the detailed insight within this particular topic. That is, as per his statement, 30 metric tons cotton waste is also available, which is actually improving the mission of biomass. I am very much thankful to our respected Director General, Dr. Tripta Thakur, for providing the guidance to have the success of this program. I am very much thankful to Dr. R.K. Mishra, our Principal Director in NPTI Nagpur, for providing us this opportunity to conduct this program. I am very much thankful to Dr. Manju ma'am, the Principal Director in NPTI Corporate Office Faridabad, for providing the insight within this particular program. Last but not the least, I am very much thankful to Amit Agrawal for providing his expertise for conduction of this program, as well as Yogesh Garjalwalji, who is the Director of Sanjeevani Agro Machinery. And last but not the least, it is important to give thanks to pellet manufacturers who have joined this program in order to have the insight within the new government policy. And it is important to give thanks to Mission Directed Biomass
for providing opportunity to NPTI for conduction of this one-day capacity building program at NPTI Nagpur. Thank you very much, sir. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Madam Delegates. Thank you, all the Thank you, sir. dignitaries. Thank you, And sir. hope this session will continue, Yes. and the session will have long-term impact on the nation building itself. As the Director General already expected, this program will have interaction, and everybody will learn from that. It's a win-win situation from all. So I thank you all the delegates, and hope to, if possible, we can have some 5 minutes break for the tea, or then we can continue the session. Okay, sir. Thank you. Madam, if you are Thank free, you. you can just Thank join. you. All the best. All the best. Thank you, madam. Thank Okay. you. Thank you, sir. Thank you. All the best. Thank you, Nafta. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Manju ma'am, thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sanjay ji. हेलो अभी टी ब्रेक 5 मिनट देके चालू कर दो. हाँ सर शुक्ला जी can continue after 5 minutes. ठीक ठीक है. Those who have not taken tea, वो चाय पिला दो. Those who are joined online, kindly wait for 5 minutes. We can start again. Those who are in the online.
चलिए, गुड मॉर्निंग। आज के एक दिवसीय प्रोग्राम पैलेट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, इसके हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर एस.के. शुक्ला जी, हमारे गेस्ट श्री सुशील कुमार जी, हमारे गेस्ट कटारिया सर और मिस्टर प्रकाश राव। आप सभी हमारे जितने भी अतिथि हैं और जितने पार्टिसिपेंट हैं, सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में जो बेसिकली पराली से रिलेटेड या जो बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य में जो भी फसल से रिलेटेड एग्रो रेसिड्यू जो यूज में आ रहा है, उसको किस तरीके से हम लोग अभी यूज करेंगे पैलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और पैलेट मैन्युफैक्चरिंग जो यूज होगा फिर हम लोग थर्मल पावर प्लांट में यूज करेंगे। तो बेसिकली यही हम लोगों का प्रोजेक्ट है और इसी का हम लोग आज प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर एस.के. शुक्ला जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे कैसे हमको क्या करना है, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो हमारे मिशन डायरेक्टर श्री सुशील कुमार जी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन जो बेसिक इस पर वर्क हो रहा है, जो वर्क किया जा रहा है, जितने अच्छे तरीके से कटारिया जी और मिस्टर प्रकाश राव, इन दोनों ने मिलकर इसको जिस तरीके से आगे की ओर डेवलप किए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं इन लोगों को, जो पैलेट मैन्युफैक्चरर हैं, इन दोनों लोगों को, पैलेट मैन्युफैक्चरर तो बहुत हैं, नागपुर में मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे पैलेट मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन तो इन दोनों ने काफ़ी इसमें स्ट्रगल किए और काफ़ी इस प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ाए हैं। इसीलिए इन दोनों सज्जन इंसान को मेरे तरफ से अभिनंदन है। और आज के हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं डॉक्टर एस.के. शुक्ला जी, शुक्ला सर इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए और एक्सप्लेन करेंगे भी, क्योंकि जो हमारा बेसिक प्रॉब्लम है, उस बेसिक प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका एक्चुअल में क्या सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए, थैंक यू। तो अब हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.के. शुक्ला जी हैं, इनको हम लोग अपनी तरफ से सुशील कुमार सर, कटारिया सर, जिन्होंने किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे की ओर डेवलप किए, उसके लिए और प्रकाश राव साहब भी पैलेट प्रोजेक्ट को आगे की ओर डेवलप करने में काफी जैसा कि ये आज का प्रोग्राम था, प्रोग्राम को हम लोग कोशिश करेंगे और इस तरीके से करने के लिए जो भी हमारे पास मैन्युफैक्चरर आए हुए हैं। बेसिकली मैन्युफैक्चरर हमारे मिडिल पार्ट हैं, मिडिल पार्ट जैसे फॉर्मर हो गए, फार्मर जितने भी हैं, इसके बाद पैलेट मैन्युफैक्चरर, और जो थर्ड फेज है इसको किस तरीके से हम लोग को यूज करना है। ये तो अभी का हम लोग का जो क्लास, अभी का जो लेक्चर स्टार्ट होगा डॉक्टर एस.के. शुक्ला सर का होगा। अभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। बेसिकली बायोमास को किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस। स्लाइड कैसे दिखेगी मुझे? नहीं, आप ये साइड पे क्या दे सकते हो। ऐसे क्या दिक्कत है? ऐसे क्या दिक्कत है? मैं आपको कैमरा चेक करूंगा।
स्टार्ट करना। ऊपर वाला थोड़ा सा, हाँ हाँ खुला ही है। उस पे कनेक्ट कर रहे हैं ना, टाइम लगेगा। स्टार्ट किया जाए, आवाज जा रही? Once again, I welcome all of you on behalf of NPTI. So, hello, थोड़ा धीमा। So, shall I start now? Yeah, my topic of presentation is global scenario of biomass wood-based pellet production. That will be my topic of presentation. I am Dr. S.K. Sukla, Principal Scientist and Officer in Charge, Jining Training Center, ICAR Sirkot, Nagpur. Okay. So, what is the pellet that we have to see first? That pelletization is the process of densification of biomass. Generally, we make pellets of 6 to 12 mm diameter, except in the power ministry, which they have suggested for making 25 mm pellets. Why we make pellet? Because it is easy to handle and burn as compared to, because it has uniform shape, uniform size, and very high energy density. And worldwide, if we look into that, mostly wood pellets are being utilized, and they are used for cooking purpose, heating, residential heating, commercial heating, as well as for power generation purpose. And if we look into the comparative performance, that agro-based pellets are also equally good if they are used from selected biomasses. There are some issues with selected biomasses that we will take up later in the presentation. So there are two type of dyes technologies. That's the flat dye. It is basically used for making very small production units, 100 kg, 200 kg per hour production. But ring dye that is used, it gives very high production. It's ranging from 1 ton to 5 ton, even more than that is possible with the ring type dye pellet machinery. So how it span out worldwide, that very small reference I will give, that we are around 10 years behind the world pellet production. Why we are behind that we will discuss. If we look into the data, that data we have taken from N+ organization. So in that is they are dealing mainly in European Union and other developed countries. If we see here that it started from 2000 itself, and if we look into that up to 2020, it is around 54 million ton production is achieved worldwide. And here black is there up to 2011. That means not much classification, country-wise classification was there. But later on 2012, when all the it has picked up, then country-wise distribution is also given. That we can see here that European Union is the leader in manufacturing of pellets. Other Europes are also there. North America, South America is there. Asia is slowly picking up. Initially it was very less. Now there is significant progress in Asia in the pellet manufacturing unit. And if we look into the Indian story started very late. I think Mr. Bharat Kataria is here. We are proud of him. He is the pioneer of establishing
pellet manufacturing, not only in India, in Nagpur, but also in India. So it started around in 2006-7 when British Petroleum Corporation, BPC, which started establishing a plant on buyback basis. So it was established few plants in India. Mr. Bharat Kataria was one of them who established plant. But later on, because of slowdown in industry, BPC was sold out. So they were asked either to start or your own or sell it off. So suffering India, few persons from BPCA, they started First Energy. In that, Bharat Kataria sir has started manufacturing the pellet. They have come out with the stove also. It started very slowly, but now it has picked up. That is very good. And several manufacturers, Mr. Prakash Rao is one of them. He is actually pioneer in briquette manufacturing. He started with some other objective. Later on, he found that it can be utilized for power production also. So Nagpur, these people have started work and slowly it has picked up. That I've seen it. And 2017 or 15 onward, it now people have started talking about technologies known to everybody. Now we can say that Nagpur is also leader in pellet manufacturing using biomass as well as wood-based pellets. Now let us come to that how much pellet production by region wise is there. If we can see that how much growth is there in 17-18, European 28 or 27 countries, 10% growth is there. Other European countries, which is around 27 countries, again 7% growth is there. North America is 5% growth is there. South America, not much growth is there. China, it is 21%. China was 0 in 2010, but in 2020 or 2021, they are producing almost half the pellets produced worldwide. That around 20% growth every year they are showing. And not much information is there whether they are utilizing wood or biomass. People are expecting that around 80% wood is used and 20% other biomass are utilized in China. Asia, as I talked of, not much production is there, only 3.7 million ton is there, but but growth is very high, around 54% growth is there, and total growth is 14% in this pellet production in 2017-18. Now distribution of pellet production worldwide, we can see that same North America 20%, China around how much is there, I am not able to see it, 24%, and European Union 30%, and South America 1%, other Europe 6% is there. In 2018, 2020, if we can see here, other countries have come into effect. European Union have jumped to 44% from this area, and other Europe 12% is there. North America have come to 10%, which was 20%. That 30% they have also grown, and South America 3%. So you can see here that Asia is still lagging, very less percent. I think Asia is hardly 11% total. Now we can see here that how the pellet production growth is taking place. I have taken example of two countries. These are the two countries, China and USA. If we look into the China, that it was almost 0 in 2010. 2014 it rose to 5 million ton, and now it has reached to around 27 million ton. That's exactly 50% of total production is coming from China alone. US is steady progress is there. Slowly they are progressing it, but not the frog jump taking by the China. The growth, if we look into that, that China growth is 21%, and Vietnam in Asia, that is growing at 55%. Vietnam not only in biomass pelleting, but also in the yarn manufacturing as well as cotton value addition. They are leading players. They are giving tough competition to Bangladesh, Singapore, and as well as India.
And the story is that they don't even have a cotton production area also. They are importing cotton from India and Pakistan as well, and value adding as giving competition to all the players. US growth is 4%, very steady growth is there. And if we see that total world pellet production into 17-18, we can see here that around 55 million ton production is worldwide. Actually, production is more than this. The data which we are quoting is from N+. So N+, whosoever is the member country, they are only showing to that data. But I hope it is more than that. But there is no source to quote. India also, what I feel, Indian Pellet Association should also come out with such type of data so that we can counterclaim and we can have a business with other countries. If we look into that, what are the uses of pellet worldwide? So we can see here that commercial and residential heating is leading here. In the total, we can see here that European Union, they are utilizing large quantity for commercial heating as well as residential heating. And this power generation also, you can see here that other European countries as well as European 27 countries, they are using. Asia also, it is utilized for power generation purpose. And there is also utilization for combined heat and power appliances. That is also around 2.5 million metric ton is being used. If we look into that here, that how much pellet and how much percentage is used worldwide, that is given here. That Asia, how much being used, Asia 16% used, and how much total is there, that is given here. And if we see here that total industrial application is 48%, residential and commercial heating is 52% overall. And region wise, if we can see that how much growth is there in pellet production, we can see here that China growth is very high in 17-18. That already we have discussed. Asia is also around 50%. Total growth here is shown is 21%. If we look into that, which countries are utilizing most pellet for power generation as well as for commercial heating as well as for combined heat, commercial as well as residential heating, UK is the leading player and followed by other countries. Most of these countries are European 27 countries. And if we look into the data that how much growth in the power generation taking place worldwide, you can see here up to 2020 data is given here. UK very strictly they are utilizing pellet for power generation purpose. Belgium is steady, and we see here Netherlands also taken jump here. Denmark is also steady. So these two countries, Netherlands and UK, they are converting their most of this coal-fired boilers into the pellet-fired boilers. What is the reason? If we look into that, these countries, developed countries, Germany, UK, Netherlands, France, why they are switching over from coal-based power plant or any other type of power plant to wood-based pellet plant? Reason being, there is one clause that if somebody is using biomass pellet or wood-based pellet, that will not be considered as polluting units. So they have taken that clue into account and converting all their power plant. Nowadays, you see that global summit is there. In that, everybody is telling you have to cut down your carbon footprint. So it is actually they are utilizing that clause and showing that our power plants are not producing any carbon footprint. They are pollution free, but it is not the case. These units are also creating environmental problem, have pollution issues, but because clause is there, that's why they are converting it.
one more issue is there, that these countries, they are mostly utilizing 90%, they are utilizing wood only. Rarely 5 to 10% they are utilizing biomass. So indirectly they are hurting the environment, but they are becoming the champion of the environment. That is to be countered. Many papers or research articles are there on these aspects, whether their power plants are really pollution free, that has to be seen. Evolution, annual sales of pellet stoves. Now one trend is there. India also, we are trying to market pellet stoves. I don't think much is utilized because initial investment itself is very high. So there is a lot of resistance from the end user. Particularly scope is there from these roadside dhabas, as well as these snacks makers, sweet makers. They can very easily convert their gas-fired furnaces to these pellet-fired furnaces, stoves. Resistance is there, but still a few people are using it, but there is large scope. If we convert all the commercial gases furnaces stoves to these pellet stoves, so there will be large amount of reduction in the gas consumption. Because if we just calculate the data that how much sweet manufacturers are consuming gas compared to the residential cooking gas requirement, I think it is more than residential requirement. Cost is very high, and more than 80% people, they are using domestic gases only. They have links, they have 10-15 cylinders, immediately they get it back. So now the government should make it mandatory. At least like 5% now we are making mandatory for power plant generation unit to use co-firing. Similarly, for the sweet making and all, we have to fix that 10% minimum. You have to go for it in the coming years. Later on, you have to increase day by day. So if we see here that how much pellet stoves are being sold here, it is the France data. You can see here steadily they are going here. Italy, slightly decreasing trend is there, and in Spain also they are increasing. Pellet importing and exporting countries, we see here that which countries are importing pellets. Germany is importing around 25% pellet. Romania is importing around 52%. Czech Republic 19%, others 4%. It is data of European country, not across the world. And here we see that which countries are exporting here. So Italy is exporting 87% of pellets. Others are exporting 4%. Switzerland 4%. Germany 5%. Germany importing, exporting both is there. And what are the type of raw material they are utilizing for making certified N+ certified pellets? Around 82% they are utilizing. Global, they are telling, global 82.3% they are utilizing residues. These residues should not be confused with the biomass residues. These are wood-based residues. And 17.7% they are using virgin wood. That means that plant trees they are cutting and utilizing for pellet manufacturing. And if we see into European Union, 85.3% they are using this wood-based residues, and 14.7%, around 15% they are using virgin wood. So these woods are mostly coming from which country? They are coming from African countries. So Western African countries are nearby those European countries. They mostly cut the trees. We have seen personally here, Malawi and all, it's totally deserted. They have totally cut their plants, utilized for pellet manufacturing, and supplied it to the European Union. That if we look into that, the fuel which they are using, so what are the fuel properties of those selected fuels? If we see here that they are mostly using this wood-based material. So what I would like to highlight here, that moisture content is very high initially. Whosoever manufacturer want to utilize wood-based residues in India, they have to go for the dryers.
because the moisture content is around 50 to 60%. But ash content is very less. Ash content is hardly 1 to 3%. They are even so, yeah, 1 to 3% or 0.54 to 0.5%. If somebody is going for pine wood, as Abalone is manufacturing in India on Gujarat seashore, their pellet is hardly having less than 0.2 to 0.3 to 0.4% ash content. That is only typical biomass fuel. And these stocks which they are using, they are showing moisture content 20 to 30% and ash content 5 to 7%. So that is similar to our country scenario also. And this calorific value for wood, they are showing around 4,500 kilocalorie per kg. That is more or less equivalent to what we are getting in India also. And that residues, agri residues, they are showing around 4,000 kilocalorie per kg. That also we are getting in India. If we look into that, I will go to the next sheet. Here, N plus pellet specifications, they are very tough. I don't think we can make it in India, such type of pellets which we are utilizing for industrial applications. So they are certifying pellets of 6 mm diameter and 8 mm diameter only. And length, they are recommending 40 mm, that is not an issue. Moisture up to 10%, they are accepting. Ash content is very rigid here. They have 3 categories, N plus A1, A2 and B category. In A1, it is 0.7%, A2 it is 1.2%, and B it is less than equal to 2%. These are very tough. I don't think it is achievable in our working condition. Durability 98% is very easy that we can achieve here. And fines 1%, less than 1% is also not tough. Temperature of pellets at the arrival 40 degrees Celsius, that is also not an issue. Net calorific value 4.6. If we convert into that, it comes to around 4,000 kilocalorie per kg. It is kilowatt hour they have given. Bulk density 600 to 750. 600 is achievable. That is not difficult thing. Additives, they are suggesting less than equal to 2%. If we are going for any additives, that should be limited to 2% that they are telling. And that nitrogen, these are the very tough if we are going for biomass based pellets. Sulfur 400 ppm, 500 ppm. Chlorine 200 to 300 ppm. That is also very difficult to achieve for biomass pellets. And ash deformation temperature, that is also very important parameter because it decides whether clinkering formation will take place or not. In India, we are claiming 900 degrees Celsius. Even we are facing problem in India with 900 degrees Celsius, but they are asking around 1200 to 1100 degrees Celsius. That is also very tough. I think these manufacturers can have their comments. Again, these are the heavy metals they are talking about, chromium, copper, lead. So that data we don't have, that how much we are getting in India, zinc and all. Zinc also is classified here because the farmers use a lot of zinc in their crop manufacturing production. Now we got into the that there is another is standard in USA followed. USA, they are having one institute, Pellet Fuel Institute, Seattle. They have 3 classes of pellets. So in that their classes are premium grade, standard grade and utility grade. So that we have seen here, most of them are achievable. At least utility grade we can achieve in India with no problems. Less ash content less than equal to 6%. But only chlorine is an issue, that is less than equal to 300 ppm. If we are going for selected biomasses or wood-based pellet, then only 300 ppm is achievable. Otherwise, difficult to achieve. Other parameters they have not classified.
that nitrogen, sulfur, etc. Heating value also they have not classified. So on these patterns, we have tried to develop that how should be our Indian pellet standards. That we have what is the achievable under Indian condition. That bulk density we can achieve 600 kg per cubic meter. Diameter we can make 6, 8, 10, 12, whatever is end user likely to buy. Durability index we can very easily achieve 95%. Fines less than equal to 1% we can achieve here under Indian conditions. Inorganic ice, that if we are going, especially if we are going for cotton stock and other material, ice content will be 5 to 6%. So up to 5% or up to 10% also is coming if we are using biomasses. So that should be acceptable in our Indian condition. Length also 40 mm is not an issue. Moisture 8 to 10% is possible to make. Chloride we have seen here, we have to slightly be flexible. 1000 ppm is to be allowed for Indian condition. And heating value we can achieve more than equal to 3500 kilocalorie per kg. 3800 is well enough. Even 4000 is also can be achieved. This we have already discussed here. So if we compare that which type of pellet we should go for, whether we should go for a torrefied pellet or normal pellet, if we see here that if we compare our pellets with the coal as well as fresh wood, we can see here moisture is very high in fresh wood, whereas wood pellets or biomass pellet, it will be 7 to 10% range. And torrefied pellet will be further less, 1 to 5% level. And this coal, it will be 10 to 15%. Calorific value, we can, fresh wood is very less. Wood pellet 16 to 18 gigajoule per ton is there. And torrefied pellet is slightly high. Bulk density, 600 kg per cubic meter is available here. But energy, if we just look into here, that ice content is coal is very high. It varies from 10 to 20%. And whereas if we are making biomass pellet or wood pellet, it will be limited to 5 to 6%. Torrefied material, it will be limited to 0.4 to 2.5%. If we look into the grindability, because power plants, they grind the material and utilize for co-firing purpose along with the coal. So grindability is good for torrefied pellet. That is to be seen. If we are going for wood pellets, grindability is poor. That's why power plant is suggesting that torrefication is to be promoted. But we will suggest that if we are going for grinding, so why not to use briquette? That is also is to be explored, because briquette, if we are going for briquette utilization for power generation, your initial investment will be limited to 30 to 40 lakh rupees or sometimes 50 lakh rupees. For pellet manufacturing, we have to go for 3 to 5 crore rupees. Machinery, only one machine is required in briquette, whereas a number of machines is required in pellet. So that's why that we have to explore whether if we are really going for grinding the material before mixing into the coal, why not to go for briquette? That is to be explored if quality is assured. Now we look into that what are the worldwide, what are the material utilized, that we have already discussed. Wood is utilized for 80%, less than 20% agri biomass is utilized. But what are the difficulties in agri biomasses that we are facing in India? That we are already working with Thermax, which are utilizing large amount of briquettes for power generation purpose. They have facing certain difficulties in power generation unit. But only what I feel that not much companies has come forward and reported against briquette, because cotton stock briquette particularly, from 2008 onward, one briquette manufacturing is unit is there in Katol. They are utilizing only cotton stock, but
no report was received against that material. But Thermex has issues. What issues they are suggesting is that in this cotton stock based material, chlorine, sulfur, silica, and ice content on higher side. And it has low ice melting temperature around 800 to 900 degrees Celsius temperature. So that is resulting into the boiler tube choking. That is requiring frequent cleaning up the boilers. They are telling that normal material, it requires once in a week time. But if we are going for cotton stock material, it is required minimum twice in a week, as well as clinkering formation, clogging of the tube, wearing, tearing of the tubes that are the frequently occurring. So that's why cotton stock usage is limited. But we have to find out that optimum usage of cotton stock. Okay, 100% don't use it. But what is the problem in using 15 to 20%? If even 15 to 20% is replacing other material, that will be good enough. So what are the materials which are currently being utilized without any problem? Soybean stock is utilized. Bagasse, that is favored material for briquette, for particle board manufacturing. If it is available, that is also good material. Groundnut shells are utilized. Even bamboo materials are utilized. All those materials are utilized without having any problem. But cotton stock, as I mentioned, has some issues. So, but there is abundance availability of cotton stock in India. Around 30 million ton is available. If we look into the data of Maharashtra alone, that around if you look into here, that this much 1 crore acre available material is the acre is available in Maharashtra cotton cultivation area. If we see that minimum 1 ton is available from 1 acre, so that means 1 crore tons is available in Maharashtra alone, and value addition means 1,000 crore rupees is possible. That is only for at the farmers level. And Vidarbha, if we look into that, 400 crore value addition is possible. Marathwada is 400 crore. So per village in Maharashtra, we have seen around 1,000 acre cotton cultivation is available. So 1,000 ton biomass, cotton biomass is available. So every village around 10 lakh revenue can be transferred to farmers' kitty by utilization of cotton stock biomass alone. So not only pellet, many other products are possible. Briquettes are possible, particle boards, all those things are possible utilizing the cotton stock. We have conducted studies with different material. I have found that cotton stock pellet is equally good to this wood waste material, as well as ground nut shell material, sawdust and cotton also we have utilized. So it is very much comparable to other material, as well as it is much better than coal. And we have actually used cotton stock with some binder material. Cashew shell powder we have utilized 5%, charoli powder we have utilized 5%, and that we have found that calorific value we achieved around 4,000 kilocalorie per kg with ice content 4 to 5% level. We can utilize salt seed powder also for this as a binder material. So if we look into that, this optimized pellet from cotton stock and other material, we can reach up to bulk density 640 kg per cubic meter. This pellet durability index we can achieve 97%. Fines we can limit to 0.04%, and ice content to 4%, calorific value to around 4,200 kilocalorie per kg. And if we look, just compare our data with the PFI institution, that we can very easily achieve this utility grade pellets from cotton stock. So we have conducted awareness program for African countries, that we have taken them to one briquetting plant that we have picture here, and we have developed pellet stoves that we have supplied to several this roadside vendors. They are utilizing it. That was demonstrated to one UNCTAD, this United Nations organization visiting CEO, that
how we can save around 75% our cooking cost if we switch over from commercial gas to pellet based cooking purpose. Now coming to that, which type of pellet plants are viable in our country. So there are several pellet manufacturers who produces pellet machinery that gives around 100 to 150 kg per hour production. So, but we have critically looked into that. We have investigated all those machinery. We have found that those plants are not commercially viable, because initially it was okay when not much manufacturers were there. They were supplying pellet as premium price, 10 rupees, 20, 15 rupees, 12 rupees a kg. Nowadays, very large plants have come up which are producing minimum 2 ton per hour to 5 ton per hour. Their production cost is very less as compared to the small plant. So we have, if we are planning for going into the pellet manufacturing system, we must have to go for the commercial size plant. So what are those machineries requires? First thing that we have to arrange for biomass collection. That is also a very important issue. If biomass collection is not in place, so your machinery will be idle. So you have to arrange first how biomass is to be collected. Second, when biomass is collection is done, you need to have one shredder machine for chipping it to the small size to 50 mm sizes. Then if required, biomass is drying is not required. Nobody can afford it. If somebody is going for sawdust, drying will be required. If sawdust is utilized, dryer has to be used. Otherwise, straightforward, we have to utilize one hammer mill that will hammer the material to 3 mm sizes. And we have to now batch mixer is required, where some binding material is to be added along with the powder. Then we have to pelletize it using a ring die type pelleting machine is there. Then we have to cool the material so that it is not breaking after pelletization. And finally, you have to bag it and transport it to the end user. That is the total flow diagram of biomass pellet production unit. I think picture is missing here. So picture is missing. I think compatibility issue is there. So name is there. Just I will here these pictures of the machinery is there. So first drum chipper is required. This is for 2 to 5 ton 2 to 5 ton per hour capacity plant is there. Drum chipper, rotary drum dryer, hammer mill, and pellet mill and cooler. These are the machinery which we have discussed in the flow diagram. And one magnetic separator will be required to safeguard your pelleting machine. So what will be the budget for establishing such type of plant? So we minimum 3 crore rupees. It depends on land. If you are purchasing land at a very costly price, then your this budget may go up. But for this optimum plant, we can suggest that 3 crore will be enough. And Mr. Prakash Rao, he has established and he has, I think, invested more than 6 crore rupees. But he is establishing 2 pellet machine and 3 briquetting machines. That's why cost has increased. He has purchased land also at substantial high price, because highway he has purchased. It's a roadside highway is there. So 3 to 5 crore will be initial investment. Capacity minimum 2 ton per hour. One can go for 5 ton per hour also. Production cost, if somebody is going for minimum 2 ton per hour, it will be limited to 2,000 to 2,500 rupees per ton. And if we are to be very specific, it will be 2,200 rupees per ton. I think manufacturers will be better to judge this presentation. Selling cost varies. If you are supplying to the NTPC where tender is there, I don't know how the people quote very less in the tender and supply the material. So it vary from 6,000 rupees to 6,500 rupees. And if you are supplying to some private end user, which is quality conscious, he may give you slightly higher price, 7 rupees. And if you are supplying in loose quantity, it may be 8 rupees, 10 rupees like that.
And once again, I will suggest nobody should go for the flat type of die machine system. Everybody has to adopt ring die system. Then only productivity is achievable. So that beginning itself, we have said that we have actually developed logistics for collection of cotton stock. That logistics was tested in 5 villages in 2018, where we have seen that we could be able to give rupees 50 lakh to the 5 village farmers, and around 1,000 rupees per acre additional revenue was generated to each and every farmer. So that is the total. That is different thing. That briquettes are utilized for cremation purpose in Nagpur. We have also developed one crematorium that is being utilized at many parts in our country, and that is a comparative analysis is given that if somebody is going for firewood cremation and briquette cremation, how much will be the differences will be there. I think that is enough. Now floor is open for discussion. If any question is there, I will try my best to answer. To whom? Okay, I will do it, no problem. Many times what happens now, that people call me back that your presentation is there, what is the source of your presentation, and give me write-up about this presentation. So no problem, if it is educating the people, I will be happy. Any other? So yeah, Dr. Shukla, there's a question Dr. from my Kamal side. is also participating. He is a medical practitioner. Sir, any question is there? Am I audible? That regarding collection, one presentation is there from my colleague. Collection of cotton stock we have worked on, that he will make presentation. So briefly, I will explain that how the cotton stock is being collected presently and what is the feasible method. So for collection of cotton stock, it is not like stubble burning, that farmer will just burn it in the field, and they will be making their field for next cropping pattern, cultivation. Here in cotton stock, farmer has to uproot the material. If they are not uprooting, they cannot go for the plowing because its roots are very deep. So it has to be first uprooted, and they have to collect it at the side of the field. Mostly they are burning it, or they can burn in the field, entire field itself. But in that, most of the farmers, 90% farmers are burning at the side of the farm. So because they also are aware that it is hampering their productivity in the next season. So that is these are the important issues. So for this purpose, farmers are investing or expending around rupees 1,000 per acre. So that if somebody is telling to the farmer that we want to utilize your biomass for value addition purpose, he will come you and ask you and pray you that please sir, take it my biomass first, because that will be saving around 1,000 rupees per acre to their investment. So how we have to collect the biomass, cotton stock biomass. So first we have to uproot it using either some VFAS machinery or manual uprooting system. What is the practice in the field? You have to leave in the field for 6 to 7 days for drying. Then you have to collect in the field. After collection, you have to take your this tractor-based chipper there, and that chipper is very cheap. It's not much costly. It's costing around 1 to 1.5 lakh rupees, and its capacity is around 2 ton per hour. So you have to take your tractor as well as chipper to the field. You have to chip it, and while chipping itself, it is to be loaded into the trolley. And once it is loaded, you have to transport it to the nearby plant. Maximum 25 kilometer is feasible. So that is the method so far, practice and feasible. So not much automation is done so far because it is complex process. Farmers are
not allowing if you are cutting your plant, your their cotton stock. It has to be only uprooted. So for uprooting, large force is required. Either you have to use BFAS while plowing purpose, rotavator, or you have to manually do it. Okay. No. Calorific value is for any biomass, including bamboo, is limited to 4,000. So for whatever we have found, 4,000. Pandian 4,000 only. But ice content is less. Ice content in bamboo is 2 to 3%. Excuse me, sir. Hello. But in Am I audible, sir? only supporting biomass. So we have to discourage the utilization of trees. If suppose some extra trees are there which are required to be cut, like pruning and all, that will be allowed. Otherwise, virgin trees should be strictly prohibited for using either for pellet or for briquette. Otherwise, one way we are trying to save our thing, other way we are hurting ourselves. Okay, I think no. Sir, am I audible? I think next you can start. If any question is there, they can directly contact me, or they can mail me. Our office is here only, हेलो संजय जी, आवाज आ रही है? संजय सर, हेलो। अरे संजय जी, जो ऑनलाइन लोग हैं उनका भी क्वेश्चन ले लीजिए। संजय जी, if you can hear me, please take the questions who people are on the online.
Hello. 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 I am audible. Hello. 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 Sir. Hello. Hello. हाँ प्रभजोत सिंह जी. हेलो. हेलो. हाँ जी. अभिनव. मिस्टर अभिनव. हाँ जी संजय जी बताइए. मिस्टर अभिनव. हेलो. हाँ संजय जी आपको सुन रहे हैं. हेलो. हाँ मिस्टर अभिनव. संजय जी आपकी आवाज हमें आ रही है. आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? एक बार आप चेक तो कीजिए, फिर प्रभजोत से भी करा देते हैं. हेलो. आप एक बार बोलिए इधर आवाज. हाँ मिस्टर अभिनव. अच्छा प्रभजोत जी के सिस्टम से कर लीजिए या धर्मेश की ही जल्दी करके देखिए. सिंह साहब, प्रभजोत सिंह साहब, उनको फोन करके बोलिए ना कि उनकी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है. हेलो 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 हेलो. नहीं माइक ऑन है सर. अभी तो ऊपर वाला भी एक लाइन, उसके ऊपर एक लाइन नहीं, वहाँ नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे आ रही है. जो मीटिंग में ज्वाइन किए हुए ना लोग, उनको आ रही है. हाँ हाँ बाकी लोग सुन पा रहे हैं मीटिंग में. मुझे तो नहीं हो रही. वहाँ पे थोड़ा माइक सेटिंग आप. ओके सर. तो अब नेक्स्ट. Hello, Prabjot sir. I guess you were having some questions. वो छोड़ दीजिए.
हाँ अभिनव, yes, am I audible? इसमें आवाज नहीं आ रही. Hello. Yes, sir, you are audible. Please ask. हाँ, but I'm not sure whether the presenter, at the event are able to hear us. Yes, sir. Presenter is able to hear. Please go ahead. Achha. Hani, actually, that was related to some the previous presentation by Shri S.K. Shukla ji. So I was trying to ask that he presented that there is a list of Indian standards. So whether these standards have been notified or what is the source of that information? No. We have proposed those standards. Achha, that is at a proposal stage. Okay. Have you proposed it in writing somewhere? Yeah, we have proposed in writing. To whom have you proposed? To BIS or to Ministry of Power? We have proposed to our SMD. SMB? ICR. Achha, ICR, okay. So it has not reached the government so far. So this is what I think is the current knowledge. Okay. So we have some, though there are... From that organization, you please suggest that how to make it faster. So you can send a request directly to Ministry of Power, addressed to secretary from ICAR, probably from the head of the institute, and then this process will be taken up. So far, the standardization process has not commenced because right now, this entire pellet manufacturing is at a initial stage. However, to facilitate some sort of uniformity in standards, CEA, the Central Electricity Authority, which is an arm of Ministry of Power, it has made some specifications on biomass pellets. So those specifications are there. Yes. So that we have, sir. But they are not comprehensive. Because of compatibility issue, we cannot make the presentation of that particular slide. Hani, that is fine. But if you think that you have researched well on the standards aspect and how other countries are proceeding ahead with this, you can send a proposal to MOP through ICAR. Yeah, that's all. Thank you. Okay, sir. Okay. We will talk later, sir, regarding that. Any other question? Namaskar, Sanjay ji. Hello. Am I audible? Yes, sir. Please. Sir, आपने ये प्रेजेंटेशन में पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है 2200 to 2300 per ton. Yes, sir. Is it for torrefied pellets or non-torrefied? Non-torrefied. Non-torrefied. So, do you have some data for torrefied plants also? No, sir. We don't have any data for torrefied plants. So, are there any plants set up in India for torrefied pellets also? Torrefication we have not studied so far. Because as per your presentation, torrefied pellets are the best suited for power generation and having high GCV and other parameters. Those data are reported, sir. Okay. It's not my own data. Okay. Thank you. Sir, related to the plant only. So what will be the approximately cost for setting up 100 TPD plant, torrefied? Torrefied, I don't have any idea about torrefied plant. And for non-torrefied, for setting up 100 TPD? For 100 TPD means 5 TPS you are talking about. It will be around 7 to 8 crore rupees.
investment. Okay. Sir, is it possible to set up the non-tarified plant and do the carbonization process? That is difficult actually. The cost of manufacturing will be very high. So torrefication has to be studied. That we have to see that in this Nagpur area and all, torrefication is going very costly. Okay, sir. Thank you. शुक्ला जी yes, sir. हिंदी में बात कर सकते हैं? हाँ जरूर सर, हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है जी। तो अभी टोरिफिकेशन प्लांट कोई बना रहे हो या टोरिफाइड पैलेट बना रहे हो, ऐसे कोई आपके ध्यान में है क्या इंडिया में? नहीं सर, मेरे ध्यान में नहीं है टोरिफाइड बनाने वाले। और यहाँ पे पैलेट मैन्युफैक्चरर्स काफी पुराने हैं, उनसे भी मैं पूछ सकता हूँ कि अगर आप लोगों के कटारिया जी आप बना रहे टोरिफाइड? नहीं बना रहे। राव जी आप? नहीं, they are actually leaders or pioneers in pellet manufacturing, but they have not yet attempted torrefication. तो इन लोगों ने आप हिंदी में बात करते हैं सर कि ये लोग लगभग जो है 2007-8 से बना रहे हैं पैलेट, और यहाँ पे ये पैलेट मैन्युफैक्चरिंग में लीडर्स हैं, लेकिन अभी तक टोरिफिकेशन इन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो इसके दो इश्यूज हो सकते हैं, एक तो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, फर्स्ट जो है टोरिफिकेशन करने के लिए जो सिस्टम चाहिए वो इन प्लेस नहीं है। दूसरा इकोनॉमिक वायबिलिटी, जो फिजिबिलिटी है वो शायद जो है उतना है नहीं उसमें, क्योंकि आपको बहुत सारा एनर्जी लगेगा आपको एक टोरिफिकेशन करने के लिए, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। तो टोरिफिकेशन पहले ये डिसाइड करना है कि रॉ मटेरियल का करना है कि एंड प्रोडक्ट का करना है। एक बार किसी ने मान लीजिए रॉ मटेरियल का कर दिया, फिर उसको पैलेटिंग करने में भी दिक्कत जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बाइंडिंग मटेरियल अफेक्टेड होगा उसमें। तो इसमें सर अभी रिसर्च होने का है, एक बार जब रिसर्च हो करके आएगा तब पता चलेगा कि भाई इसमें इस तरीके से कर सकते हैं। आवाज नहीं जा रही जी। तो शुक्ला जी, जिसका हाँ, रिसर्च ही अभी करना है, हाँ, उसका 50% अभी एनटीपीसी टेंडरिंग कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि मिनिस्ट्री और एनटीपीसी को ये देखना नहीं चाहिए क्या कि टोरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी देश में नहीं है, न कोई बनाने वाला है, तो 50% को क्वांटिटी का टेंडर निकाल क्यों रही है? नहीं, अब ये मिनिस्ट्री वाले ज्यादा अच्छा रिप्लाई कर सकते हैं सर। मतलब कोई टेक्नोलॉजी अपने देश में नहीं है अभी टोरिफिकेशन? नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। इसमें ऐसा है कि देखिए टेंडर निकालना एक बात है, लेकिन अगर टेंडर भी नहीं निकलेगा तो फिर लोग ये बोलेंगे कि टोरिफाइड पैलेट्स की तो डिमांड ही नहीं है मार्केट में। तो टेंडर निकालना बुरी बात नहीं है। अब हमारा कंस्ट्रेंट अभी ये है कि उसको बनाया जाए, और मशीनरी देखिए ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। आप OEMs हमने हमारी लास्ट मीटिंग में आए थे तो उनके पास मशीनरी अवेलेबल है। सिर्फ यही बात है कि वो मशीनरी अवेलेबल है, लेकिन मशीनरी अभी कभी यूटिलाइज नहीं हुई है, उसका कॉस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, और टेंडर कॉस्ट में जो है पुराएगा क्या, वो सब चीजें उसमें इश्यूज हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक कम्प्लीटली कोई चीज कमर्शलाइज नहीं हो जाए तब तक टेंडर करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना खुद का मानना है, आई में भी रंग ऑल्सो। तो बहुत सारे इश्यूज है सर उसमें टेंडरिंग प्रोसेस में, जैसे कि उसमें 25 mm पैलेट किया है, आइस कंटेंट भी बहुत ज्यादा किया है। आइस कंटेंट शायद जो है राइस हस्क को या राइस जो है स्टेबल बर्निंग को लेके किया गया है। तो अगर 20% हम लोग आइस कंटेंट परमिट करते हैं, वो किसी भी बायोमास उतना नहीं है, अगर एक आध दो छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग क्या कहते हैं इतना बनाने के लिए क्या हम उसमें मिट्टी डालें क्या? तो वो सब चीजें भी थोड़ा से देखिए वो स्पेसिफाई करने की जरूरत वो है। अपर लिमिट है। देखिए उसको आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि वो मैक्सिमम लिमिट है? आप 1% ऐश वाला भी पैलेट दे सकते हैं। नहीं सर, मैक्सिमम है, लेकिन मैक्सिमम कोई चीज जैसे रहता है ना कि किसी के पास रसगुल्ला रख लीजिए, मॉइस्चर की भी मैक्सिमम लिमिट्स होती हैं, तो आप एक भी उठा सकते हो, तो आदमी पांचों उठाने के चक्कर में रहता है। तो इस तरीके से आइस कंटेंट इतना ज्यादा हाई लिमिट किया है कि उसमें लोग क्या करते हैं कि फिर माल प्रैक्टिस करेंगे, अल्टीमेटली एंड यूजर को नुकसान होगा। नहीं शुक्ला जी, मैं उसमें आपको आर्ग्यू कर रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए।
वो तो एनटीपीसी ने बहुत बढ़िया फॉर्मेट निकाला है। आप एस कंटेंट 20% क्यों 30% वाला दीजिए ना, आपको कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा। जितना एस कंटेंट ज्यादा होगा जीसीबी लो हो गई। हमने ये किया हुआ है, एस कंटेंट के आधार पे हमारी जीसीबी निकलती है, मॉइस्चर के आधार पे हमारी जीसीबी निकलती है, इसलिए उसको छोड़िए। आपकी मशीनरी जो बीकेन है उस हिसाब से आप अभी गाइड कर रहे थे। मेरा ये एनपीटीआई को भी कहना है सर कि जो भी प्रेजेंटेशन देने उनका प्रेजेंटेशन एक बार आप सुनिए, या तो जो भी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उनके साथ आप पहले बात करिए, उसके बाद में प्रेजेंटेशन दिलवाइए, तो सबका क्या समय खराब नहीं हो। जैसे अभी आपको शुक्ला जी मैं बताऊं कि आपने जो भी प्रेजेंटेशन दिया ना उसमें कई सारी बातें रखी, वो 2017 से लेके अभी तक एनटीपीसी ने, मिशन अपने एमओपी ने और सबने मिलके बहुत डिस्कशन की है। नीति आयोग ने एक बहुत बड़ा देश के लेवल पे सर्वे करवाया था, उसके बाद में ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बनाया, उसके आधार पे ये ब्रिकेट को छोड़ के फिर पैलेट में आए हैं। आपने वुड पैलेट की बहुत सारी बातें की हैं, यहाँ वुड पैलेट की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम बायोमास के आधार पे पूरे देश को ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि सिर्फ बायोमास इकोनॉमिकली नहीं, पॉल्यूशन नहीं, हमारे देश के गांव के किसान की, और किसान जो नहीं है खेतीहर मजदूर है उनकी इकोनॉमिकली इतनी बढ़िया होगी, रोजगार इतना जनरेट होगा, गांव की इकोनॉमी बहुत ग्रो करेगी। इस लेवल पे अगर इसको सोचा जाए ना तो वुड की हम बात ही नहीं करें, न ब्रिकेट की बात करें, क्योंकि ब्रिकेट के लिए 5 साल से एक्सरसाइज हो चुकी है, इसलिए अब ब्रिकेट की बात न कीजिए, हम आगे बढ़े। बस इतना ही मेरा कहना है। तो एमओपी एक बार ये ध्यान करे, और एनपीटीआई भी एक बार जो भी प्रेजेंटेशन दे तो एक न एक बात हमारी रिपीट ना हो सर प्लीज। तो पहले उनका प्रेजेंटेशन ले लिया जाए एक बार। धन्यवाद। नेक्स्ट ले लीजिए ना अभी। फिर अभी मुझे लगता है नेक्स्ट प्रेजेंटेशन किया जाए। बिल्कुल कर दिया जाए सर। मेरा निवेदन इतना ही है सर कि जितने भी प्रेजेंटेशन दे या तो जितना भी जो कहे वो हमारे विषय से हटके कुछ ना कहे। ये बायोमास मिशन है, बायोमास को कैसे हम यूटिलाइज कर सके, हम उसके लिए पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कितना ज्यादा लगा सके, उसके लिए ही सब बातें हो तो क्या सार्थक हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। पहले स्लाइड सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे इंचार्ज डॉक्टर शुक्ला साहब का और एनपीटीआई का, मुझे यहाँ पर थोड़ी अवसर दिया गया है इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बोलने का, जिसमें कि ये यूज ऑफ कॉटन स्टॉक बायोमास या एग्रो रेसिड्यू बायोमास पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। इसमें मैं स्पेशली कॉटन स्टॉक बायोमास कलेक्शन के ऊपर बात करूंगा। जो ब्रिकेट पिलेट बनाने का जो इशू है, इसमें मैं समझता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट इशू यही है कि कलेक्शन कैसे किया जाए। फार्मर्स इसलिए जलाते हैं कि उसमें फार्मर्स को वैल्यू नहीं दिखती है, वो कचरा समझते हैं कॉटन स्टॉक या डंठल को। कपास चुनाई या पिकिंग के बाद में उसको कचरा समझ के जलाया जाता है। अगर वो उसमें वैल्यू देखे, उसमें वो पैसा देखे तो जलाएगा नहीं। तो ये समस्या इसलिए है कि आप जैसे देख रहे हैं, पहली स्लाइड में देख रहे हैं कि अपना एरिया जो है कपास का 12 मिलियन हेक्टेयर्स, इसको पूरे डंठल कलेक्ट करना, पिकिंग करना, हार्वेस्टिंग करने के लिए कितना मैन पावर लगेगा, और बहुत सारी पावर लगेगी जिसको साइज रिडक्शन में, चिपिंग करने में। यही बड़ी समस्या है। इसकी वजह से ये अभी तक ये किसान एनकरेज नहीं होते हैं अभी तक पिकिंग के लिए। इसको हमको अप्रोप्रिएट एक मेथड देनी चाहिए और एक उनको सुविधा देनी चाहिए ऑन फार्म, जहाँ की उसका जो कॉटन स्टॉक कलेक्ट किया जाए और उनको वहीं पर फार्म पे पैसा मिले। तो जैसे कि अभी जिनिंग इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड है, वैसे ब्रिकेट पिलेटिंग इंडस्ट्री को ये काम करना पड़ेगा कि किसान पे फार्म पे जाकर के वो चिपिंग करवा के चिप्ड का बायोमास को अपने फैक्ट्री तक ले जाना पड़ेगा। तो ये पहली स्लाइड ही मोटा मोटी सार बताती है
कि देखिए बहुत सारा मैन पावर लगेगा पर एकड़, 10 से 12 मैन पावर लगता है ये चिपिंग करने के लिए। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि पहले कॉटन स्टॉक को हार्वेस्ट किया गया है, मतलब मैन्युअली निकाला गया है। इसमें आप देख रहे हैं रूट भी उसके साथ दिख रहे हैं। तो हाथ से निकालना 4 से 5 लेबर लगता है पर एकड़, और जिसमें किसान का लगभग 500 से 1000 रुपए लगता है इसको निकाल के रखना। और फिर उसको ड्राइंग के लिए 1 हफ्ते रखना पड़ता है। ड्राई होने के बाद में 2 टन पर आवर का ये चिपर लगेगा, ट्रैक्टर ऑपरेटेड चिपर और ट्रांसपोर्ट ट्रॉली या ट्रक, जिससे कि ये नियर बाय ब्रिकेट या पिलेट मेकिंग फैक्ट्री में लिया जा सकता है। इन एब्सेंस ऑफ दिस यूनिट्स फार्मर हैव नो अदर वे दैन टू रिसोर्ट टू बर्निंग, क्योंकि अगर ये ऐसे ही रखा गया तो उसमें फिर बाद में पेस्ट की समस्या आती है, जो कि पिंक बोलवर्म वगैरह है उसमें काफ़ी पनपते हैं। तो फार्मर्स को ये कॉटन स्टॉक अगर नहीं टाइमली गया तो जलाना पड़ता है। सबसे अच्छा और फास्टेस्ट तरीका मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ एनी वेस्ट इज लाइक एज वी नो वी बर्न द थिंग्स, so that is the quickest way of disposing the waste. But if this is not the waste and timely taken to the this briquetting and pelleting units, the farmer would be happy to earn at least 1000 rupees per acre by selling this to the briquetting plants. So जैसे हमने देखा 30 मिलियन टन्स कपास का डंठल 12 मिलियन हेक्टेयर से हर साल निकलता है, जिसमें कि खाली 10% कमर्शियली ब्रिकेट, पिलेट या पार्टिकल बोर्ड इसमें यूज होता है। रेस्ट इज आइदर बर्न्ट इन द फील्ड और प्लाउड बैक इन द फील्ड, या तो फिर डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज करते हैं फार्मर्स। कैलोरीफिक वैल्यू जैसे कि सर ने भी पहले बताया 4000 किलो कैलोरीज पर केजी है। ये 4 मुख्य तरीके हैं जिससे कि कॉटन स्टॉक कलेक्ट किया जाता है। पहला तरीका है मैनुअल अपरूटिंग, काफ़ी ड्रजरी इन्वॉल्व है और कॉटन स्टॉक काफ़ी डीप रूटेड होने के कारण कभी उनको ट्रेडिशनल टूल या चिमटा यूज़ करना पड़ता है निकालने के लिए। तो जिसमें कि लगभग 500 रुपये, ये 2018 का डेटा है, तो अभी 800 से 1000 रुपये लगेगा पर एकड़। 1 एकड़ के लिए मैनुअल अपरूटिंग करना है, उसके बाद वो या तो किनारे रख देते हैं, ये जलाते हैं। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है मैनुअल अपरूटिंग करके फिर चिपर का यूज़ करना। इसमें 1500 रुपये या अभी कहिए 2000 रुपये पर एकड़ लगेगा। मैनुअल अपरूटिंग के बाद 1 हफ्ते के लिए उसको रखना। थर्ड मेथड है ट्रैक्टर वी पास। ये थोड़ी फास्ट और इकोनॉमिकल मेथड है देन मैनुअल अपरूटिंग। ट्रैक्टर वी पास लोकली मेड ट्रैक्टर टूल रहता है जिससे कि अपरूट करते हैं कॉटन स्टॉक, और ट्रैक्टर फ्रंट ब्लेड या इसी वी पास से ही कलेक्ट किया जाता है खेत में एक जगह, और फिर उसको चिपिंग करते हैं। एंड द लास्ट मेथड जो भी लेटेस्ट मेथड भी है, ऑन द गो श्रेडिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग एंड चिपिंग ऑफ कॉटन स्टॉक। इसमें कि शक्तिमान जैसे ब्रांड है जो बनाते हैं श्रेडर्स, जो कि हार्वेस्ट होता है, ट्रैक्टर के साइड माउंटेड श्रेडर है, एंड देन ट्रॉली में साइमल्टेनियसली कलेक्ट होता है। इसमें लगभग 1200 से 1500 रुपये पर एकड़ खर्चा आएगा। इसमें समस्या एक ही है कि क्योंकि ऑन द गो है तो मॉइस्चर कंटेंट कॉटन स्टॉक में ज़्यादा रहेगा, 40 से 45% मॉइस्चर कंटेंट रहेगा। तो ये मुझे लगता है पावर प्लांट्स के लिए मॉइस्चर कंटेंट की समस्या नहीं होगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में वेट बढ़ता है, फिर बाद में ब्रिकेट पिलेट मेकिंग में उसको ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अभी फिलहाल प्रेजेंटली जो करते हैं वो ड्राइंग प्रेफर करते हैं, ऑन द फील्ड ड्राइंग हो। तो हमारी जो स्टडी रही 2018 में जो की थी 5 गाँव में काटोल रीजन में 5000 एकड़ पे जो की थी, उसमें हमने पाया कि अप्रोप्रिएट लॉजिस्टिक्स यही रहेगा कि या तो वी पास से या मैन्युअली अप्रूव किया जाए, जिसके लिए कि 3 से 4 लोग लगते हैं, और फिर उसको 1 वीक का सन ड्राइंग देने के बाद हीपिंग करना पड़ता है चिपर के लिए एक सेंटर में फार्म के, जहाँ की चिपर इंस्टॉल होगा। चिपर और जो 2 टन पर आवर कैपेसिटी का चिपर और 2 ट्रांसपोर्ट ट्रॉलीज, क्योंकि 1 घंटे में जब ये चिपर भर जाता है तो बाय द टाइम इट टेक्स दैट मटेरियल टू ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री, द चिपर खाली रहेगा, इसलिए 2 ट्रांसपोर्ट ट्रॉलीज यूज़ की जाती है। और ट्रांसपोर्टेशन विद इन 50 किलोमीटर हो तो ये इकोनॉमिकल रहता है। एंड टोटल
cost at the factory gate is about 1500 per ton. ये वीडियो नहीं चलता है, इसमें एक वीडियो है एम्बेडेड है, लेकिन इश्यू है इसमें चिपर। हाँ अच्छा, इसमें चलेगा नहीं। चिपिंग कैसे करते हैं इसका एक वीडियो है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली चल नहीं रहा है। हाँ नहीं, अभी वो पेन ड्राइव में खाली प्रेजेंटेशन लाए थे। तो चिपर है बेसिकली 2 टन पर आवर का ट्रैक्टर माउंटेड चिपर। इसमें काटोल रीजन में हम लोगों ने चिपिंग करके देखा है, ये इसका वीडियो है। और ये ऑन द गो श्रेडिंग का भी इसमें वीडियो है एम्बेडेड। ये शक्तिमान का श्रेडर है, और आप देख सकते हैं इसमें श्रेडर ट्रैक्टर के साइड में है। हार्वेस्टिंग होता है 6 इंच अबव ग्राउंड। तो इसमें यही एक समस्या है कि रूट्स और ये कुछ स्टॉक फील्ड में रह जाता है, जिसके लिए कि बाद में रोटावेटर या दूसरा ऑपरेशन करना पड़ता है। ये एक्टिविटी हमने 5 गांवों में की थी काटोल के आजू बाजू में, और जिसमें 1000 फार्मर्स थे इन्वॉल्व, और जिसके 5 ग्रुप करके 50 HP के 2 ट्रैक्टर थे और एक श्रेडर था। और भक्ति बायोकोल काटोल को ये सप्लाई किया गया था ब्रिकेट मेकिंग के लिए। तो इसका इकोनॉमिक एनालिसिस ऐसे रहा कि लगभग 25 लाख रुपए गए थे टोटल मैनुअल अपरूटिंग एंड कलेक्शन के लिए, ये 5000 एकड़ के लिए, और चिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन लेकर के टोटल कॉस्ट हुए थे 75 लैक्स फॉर 5000 एकर्स। और सेलिंग प्राइस रही 2500 पर टन। उस हिसाब से इनकम हुआ था 125 लाख। तो प्रॉफिट 50 लाख का इसमें हुआ था 5000 एकड़ में और 5 गांवों में। तो जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया था 500 रुपये पर एकड़, या कहिए 500 रुपये पर टन, क्योंकि पर एकड़ 1 टन लगभग कॉटन स्टॉक आता है। तो ये इसमें ऐसे 500 रुपये पर एकड़ फार्मर अर्न किया बाय मैनुअल अपरूटिंग एंड चिपिंग एंड सेलिंग टू ब्रिकेटिंग फैक्ट्री। और इससे फायदा उसका ऐसा होता है कि अदर ये सेल नहीं होता तो उसको एनीवे उसको डिस्पोज करने के लिए भी लेबर लगा के 500 रुपये खर्चा आता, जलाने के लिए भी 1 एकड़ फील्ड क्लियर करने के लिए 500 रुपये और खर्चा आता। तो 500 रुपये इसमें जो अर्निंग हुआ प्लस वो 500 रुपये जो सेव किया, इस तरह से वो 1000 रुपये पर एकड़ कमा सकता है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ कॉटन स्टॉक फॉर दिस सप्लाई। तो इन कंक्लूजन यही है कि कॉटन को हम लोग खाली लिंट के लिए देखते हैं, ये ना देखते हुए कपास को भी, ये डंठल को भी अगर वैल्यू अच्छी मिले तो फार्मर उसमें पैसा देखेगा तो जलाएगा नहीं। तो उसके लिए हमको लॉजिस्टिक्स एस्टेब्लिश करना जरूरी है, उसके अभाव के कारण ही वो जलाता है। और वो अगर इसकी और अगर वैल्यू बढ़ जाए, जैसे कि और भी कई यूजेस है, कंपोस्टिंग है, मशरूम है, ब्रिकेटिंग प्लेटिंग है ही, तो फार्मर को इससे अपना इनकम डबल कर सकता है। तो अभी ये अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस इसलिए कि मशीनरी का अभाव भी है। प्रॉपर मशीनरी, अभी मशीनरी ऐसी नहीं है कि जो डंठल को रूट के साथ निकाले। अभी जो है शक्तिमान का श्रेडर है वो 6 इंच ऊपर कट करता है, तो उसके बाद उसको अगेन हैंडलिंग ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो अभी लोग प्रिफर करते हैं कि मैन्युअली चिमटा या हाथ से ही उसको उखाड़ा जाए, फिर ड्राइंग करते हैं। लेकिन ये 12 मिलियन हेक्टर पे इतना सब मैन्युअली करना बहुत एनर्जी एंड लेबर ड्रजरस भी है ऑपरेशन। तो इसके लिए अगर और भी मशीनरी पे काम हो और सूटेबल मशीनरी, अप्रोप्रिएट मशीनरी आ जाए तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, तो उसमें प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और एम्प्लॉयमेंट भी इसमें अभी तो बहुत है मैन्युअली काम होता है। तो इसलिए अभी 5000 मैन डेज हमारे जो केस स्टडी में हमने देखा जनरेट हुए ओवर 3 months पीरियड। थैंक यू। तो जैसे अभाव में, लॉजिस्टिक्स के अभाव में फार्मर्स जलाते हैं, तो कुछ उनका उसमें नटशेल कि पर हेक्टर सारी वैल्यू हम खो देते हैं। अगर अप्रोप्रिएट सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स है तो कम से कम 1000 रुपये पर हेक्टर अगर पकड़े तो भी 1200 करोड़ रुपए पर एनम का एनुअल, मतलब देश के लेवल पे, कंट्री लेवल पे इतना उसका ये है। बस यही कहना चाहता था मैं। थैंक यू।
हाँ हाँ, पर हेक्टर पर एकड़ अभी 500 रुपये हमने पकड़ा था पिछले स्लाइड में, तो इसलिए डबल मिनिमम ये पकड़ के अगर 1000 भी पकड़े पर हेक्टर, दिस कैन बी द मिनिमम। ये कंट्री लेवल पे बताने के लिए कि इतना 1200 करोड़ कंट्री लूज कर रहा है in terms of this biomass by not utilizing it properly in absence of the logistics. This is minimum figure. It can be more than that. This is 2018 figure. ठीक है। हेलो 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 हेलो। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है सर आपकी? हाँ सर, सर एनी डाउट? नहीं, बहुत बढ़िया सर ने प्रेजेंटेशन दिया, और ये जो फिगर बता रहे हैं वो कॉटन के लिए बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, और 18 का है, 2018 का, बहुत बढ़िया। इसमें बस कहने का इतना ही है कि सर ने जो ये बताया ना, उससे एक समझ में आता है सर जी। कि ये गांव की इकोनॉमी के सीधा सीधा पैसा जा रहा है। अच्छा, ये हम अगर इसको पोल्यूशन से भी न लेने तो गांव की इकोनॉमी इतनी ग्रो करेगी, क्योंकि उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, और ये नहीं तो वेस्ट ही है उनके लिए, वेस्ट का इनको वेल्थ मिल रहा है। ये अगर मिनिस्ट्री को इसके लेवल पे भी अगर सोचे ना, तो ये बहुत बड़ा देश का काम हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। फाइनल, हाँ वर्षा जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम वर्षा सातनकर है, मैं जीनी ट्रेनिंग सेंटर आईसीआर सिरकॉट नागपुर में कार्यरत हूँ। मेरा टॉपिक है आज का थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास इश्यूज एंड चैलेंजेस। सो बायोमास एक्चुअली होता क्या है? सो ये एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, जैसे अपना प्लांट्स हो जाता है, एनिमल्स, ये सब बायोमास कहलाता है, और ये बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स है। इसीलिए हम इसका यूज या तो एनर्जी जनरेशन के लिए कर सकते हैं, या और भी दूसरे यूजेस है जिसके लिए हम बायोमास का यूज कर सकते हैं। सो कहाँ से हमें बायोमास मिल सकता है? देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बायोमास जहाँ से हमको बायोमास मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन राइट साइड हम लोग पिक्चर देख सकते हैं बायोमास के सोर्सेज। हमें एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज से बायोमास मिल सकता है, म्यूनिसिपल वेस्ट मिल सकता है, एनिमल का जो रेसिड्यूज होता है, एनिमल से जो मिलता है वो बायोमास, वो भी एक बायोमास ही कहलाता है। हाउस, हम लोग का जो लोकल कम्युनिटी है, घर में भी बहुत सारा कचरा जो निकलता है, वो भी एक बायोमास का ही एक पार्ट है। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बायोमास है, जैसे फील्ड एंड प्लांटेशन बायोमास हम लोग देख सकते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप्स जैसे स्टॉक्स हो गए, स्ट्रॉ, एडिबल मैटर्स लाइक अपना फ्रूट्स हो गए, स्पाइसेस, सीड्स, एनर्जी क्रॉप्स होगी, बैम्बो, प्लांटेशन डेब्रिज एंड लाइव स्टॉक वेस्ट। अर्बन वेस्ट बायोमास में आएगा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सीवेज स्लज, किचन एंड कैंटीन वेस्ट। इंडस्ट्रियल बायोमास में एग्रो इंडस्ट्रियल बायोमास और ऑयल केक हो जाएगा, सुगर मोलासेस, फ्रूट से सॉ डस्ट, ये सब कुछ बायोमास कहलाता है। फॉरेस्ट से भी हमें कुछ बायोमास मिलेगा, वैसे ही हमें एक्वेटिक बायोमास भी मिलेगा। तो टोटल ये मिला के बायोमास कहलाता है। अब हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमें वेस्ट से एनर्जी जनरेट करना चाहिए, तो क्यों हम लोग को वेस्ट से एनर्जी जनरेट करने की आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है?
तो जैसे हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, आज हमारी सबसे बेसिक नीड हो गई इलेक्ट्रिसिटी। डे बाय डे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत और बढ़ेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी हमको, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। साथ में एनर्जी की डिमांड भी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, और क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल पे अभी ज्यादातर डिपेंडेंट हम फॉसिल फ्यूल्स पे है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे ये जो सोर्सेस है, नेचुरल सोर्सेस, वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो हम लोग को चाहिए कि हमको एक अल्टरनेटिव सोर्स देखे जिसके थ्रू भी हम लोग एनर्जी या पावर जनरेट कर सके। तो हम जानते हैं कि इंडिया हो चाहे बाहर की जो दूसरे देश है, बायोमास का जो प्रोडक्शन हो रहा है डे बाय डे वो बहुत ज्यादा, हर साल हमें एक ह्यूज अमाउंट में बायोमास मिल रहा है। और क्योंकि बायोमास में एनर्जी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो क्यों ना हम इस बायोमास का यूज करके एनर्जी या पावर को जनरेट कर सके। सो ये एक स्टेटस ऑफ इंडियन रिन्यूएबल पावर जनरेशन, कितना कौन पावर जनरेशन में कितना परसेंट अपना शेयर करता है, उसका जस्ट एक डेटा है कि थर्मल से हमें 64% मतलब शेयर वो देता है, न्यूक्लियर से 2.78%, हाइड्रो से 21%, और जो हमारा रिन्यूएबल सोर्सेस है वो अपना 10% कंट्रीब्यूट करता है। रिन्यूएबल सोर्सेस में भी हम लोग देखें तो विंड जो है वो 13 गीगावाट देता है, हाइड्रो स्मॉल जो हाइड्रो है वो 2.8, और जो हमारा बायोमास से जो हमें एनर्जी मिलती है वो जो बचा है वो बायोमास से मिलता है। लगभग 3 to 5% हम लोग बोल सकते हैं कि 3 to 5% हम बायोमास से पावर प्राप्त कर सकते हैं। सो अगर हम क्रॉप रेसिड्यूज की बात करें, क्रॉप बेस्ड एग्रो रेसिड्यूज की बात करते हैं, तो हमारा फूड ग्रेन, ऑयल सीड, शुगर केन, फाइबर क्रॉप्स और अदर जो दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ये मेन की प्रोड्यूसर होते हैं जो एग्रो रेसिड्यूज जनरेट करते हैं। तो इंडिया में 2016 के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा पुराना डेटा अब और ज्यादा बढ़ गया है, तो इंडिया जनरेट्स हर साल लगभग इंडिया 500 मिलियन टन बायोमास जनरेट करता है, इवन इससे बहुत ज्यादा करता है। सो इसमें वीट जो है वो अपना, वीट का लगभग 20% वीट कंट्रीब्यूट करता है, राइस लगभग 24% कंट्रीब्यूट करता है, शुगर केन सबसे ज्यादा करता है 26%, फाइबर क्रॉप्स 3%। सो ये उनका परसेंटेज है कि बायोमास में क्रॉप रेसिड्यूज का कितना परसेंटेज है। सो देयर आर 4 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये लगभग 47% बायोमास को बर्न करता है। सो इन जनरल प्रैक्टिस, जैसे हमारे जो किसान भाई लोग हैं, उनके पास जो भी फील्ड में जो कचरा होता है, अब क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, या तो वो नॉलेज नहीं होने के कारण ज्यादा से ज्यादा रेसिड्यूज को कुकिंग के लिए यूज करता है, जला करके उसे कुकिंग के लिए यूज करता है। कुछ लोग शेल्टर्स के लिए, छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियां बनाने के लिए बायोमास यूज करते हैं, बाकी वो बायोमास का कोई यूज नहीं जानता है। तो अगर हम फार्म लेवल पे, अगर हम किसान भाइयों के लेवल पे भी अगर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी उनको दे सके जिससे वो फील्ड में ही अपने बायोमास का यूज करके उससे अगर कुछ इनकम प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा हम लोग का प्रोग्रेस होगा। सो क्योंकि हमारे किसान भाई जो फील्ड में जो उनको बायोमास मिल रहा है उसको जला देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनको, अगर वो फील्ड में ही बायोमास जलाते तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके फील्ड में आगे फ्यूचर में हो सकती है। जैसे कि उनकी धीरे धीरे, अभी उनका जितना भी उनका प्रोडक्टिविटी है, धीरे धीरे वो ग्राफ, प्रोडक्टिविटी का, फर्टिलिटी का ग्राफ धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो फील्ड में अपनी क्रॉप जला रहे हैं। सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बहुत सारे जो अपने फील्ड में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, और इसके साथ साथ जलाने से जो पॉल्यूशन होता है वो एक अलग चीज है, ग्रीन हाउस गैसेस, उससे एमिशन होता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो हमारे किसान भाइयों को खासकर नहीं पता चलता है। अगर हम अपनी टेक्नोलॉजीज किसानों को दे, छोटे लेवल पे जो लोग हैं उनके पास लेके जाए, तो वो ना सिर्फ वो इस बायोमास का यूज कर सकते हैं, साथ में वो बहुत सारा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर एग्रो रेसिड्यूज देखें तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग उससे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिकेट्स एंड पैलेट्स, ये पूरा सेशन ब्रिकेट्स एंड पैलेट्स का है। एक तो वो बना सकते हैं एनर्जी सोर्स के रूप में, दूसरा वो लोग अपने फार्म में, अपने खेतों में उनको जो भी एग्रो रेसिड्यूज मिल रहा है उससे वो कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्ट बना के, खाद बना के, या तो वो अपने खेतों में ही उस कंपोस्टिंग का यूज कर सकते हैं, या फिर उसको भी पैक करके उसको सेल करेंगे तो वो भी एक इनकम का एक उनका सोर्स होगा। दूसरा वो ऑयस्टर मशरूम है, वो एग्रो रेसिड्यूज का यूज करके मशरूम बना सकते हैं। हम जानते हैं मशरूम कितना महंगा जाता है, तो अगर वो टेक्नोलॉजी किसानों को देते हैं तो मशरूम बना करके भी एक एम्प्लॉयमेंट, एक प्रकार का वो एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स हो सकता है उनके लिए। इसके अलावा पार्टिकल बोर्ड्स हो गए, चारकोल, कार्बन बॉक्स, इस टाइप की जो छोटी छोटी चीजें हम लोग एग्रो रेसिड्यू से स्मॉल स्केल लेवल पे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी की।
तो अगर हम बायोमास को, ये तो हो गया स्मॉल लेवल पे, अब हम थोड़ा एनर्जी से रिलेटेड बात करना चाहते हैं कि अगर इन बायोमास को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है जिसके थ्रू हम एनर्जी बायोमास से प्राप्त कर सकते हैं। सो पहला फिजिकल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, बायोमास जो लूज बायोमास है उसको डेंसिफाई कर लेते हैं और उसका रूप चेंज कर देते हैं, उसको और डेंस करते हैं, जिससे उसकी एनर्जी वैल्यू बढ़ जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन ये सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। और ये जो ब्रिकेट्स है, पैलेट्स है, इसको हम फिर आगे गैसीफायर वगैरह, गैसिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है पैरोलिसिस, उसमें जो गैसीफायर होते हैं उसमें भी ये एज अ फ्यूल हम ब्रिकेट्स एंड पैलेट्स उसका यूज कर सकते हैं। तो फिजिकल मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायोमास, देन बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज फॉर एनर्जी जनरेशन। सो बायोमास से एनर्जी जनरेशन की तीन मेथड होती है, तीन थर्मल मेथड्स होती है, डायरेक्ट कम्बशन, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन एंड बायोकेमिकल कन्वर्जन। सो डायरेक्ट कम्बशन में क्या होता है, हम बायोमास को डायरेक्टली बर्न करेंगे, उससे जो हीट निकलेंगी उससे फिर हम लोग स्टीम जनरेट करके टर्बाइन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट कर सकते हैं। एक ये मेथड होगी। सेकेंड मेथड है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अंडर थर्मोकेमिकल कन्वर्जन दो वे से कर सकते हैं। एक होता है गैसिफिकेशन और दूसरा होता है पायरोलिसिस। गैसिफिकेशन में क्या होता है, हमें लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो गैसेस होती है, और पायरोलिसिस में हमें तीन मेनली प्रोडक्ट्स मिलते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड मीन्स चार, बायोचार विल गेट, ये पायरोलिसिस में हमें बायोचार मिलेगा, ऑयल मिलेगा, बायो ऑयल मिलेगा और गैसेस मिलेगी, जो एक एनर्जी फ्यूल के रूप में हम देख सकते हैं। थर्ड मेथड है बायोकेमिकल कन्वर्जन। सो इस मेथड में हम कुछ एंजाइम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके फिर हम लोग आगे ले जाके उससे बायोफ्यूल प्राप्त कर सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया, कम्बशन क्या होता है, कम्बशन इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ कन्वर्टिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू फॉर्म ऑफ एनर्जी। So a process of burning completely the solid biomass by high temperature to produce heat, and फिर इस heat से फिर हम लोग electricity generate करने के लिए use कर सकते हैं। अब थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, जैसे मैंने बताया, दो मेथड्स होती है, गैसिफिकेशन और पायरोलिसिस। तो गैसिफिकेशन क्या होता है, ये एक पार्शियल ऑक्सीजन की, हम लोग इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन लेते हैं, लिमिटेड ऑक्सीजन, कंट्रोल्ड ऑक्सीजन का यूज करके फिर हम लोग जो हमारा बायोमास है उसको हम डिकम्पोज करते हैं। इसमें डायरेक्टली बर्निंग नहीं होता है, इसमें हम लोग उसको डिकम्पोज करते हैं, उससे गैसेस जनरेट करेंगे और गैसेस को फिर हम लोग आगे यूज करते हैं। एंड पायरोलिसिस जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, और फिर इससे हमें अगेन थ्री उसके प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। सो थर्मोकेमिकल कन्वर्जन रिफर्स टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर for the production of biofuels, including liquid, gaseous and solid fuels. So same thing, किससे हमें ये pyrolysis and gasification, these are the two way of thermochemical conversion of biomass. Then pyrolysis method क्या है? So pyrolysis is the advanced form of gasification which decompose the biomass using heat in the absence of oxygen. This process occurs at very high pressure and temperature around 500 degrees centigrades. So these are the three products which we get from the pyrolysis: bio oil, syngas and char. And combustible gases is condensed to obtain bio oil. इसमें जो गैसेस निकलती है वो उसको कंडेंस करके फिर हमें जो लिक्विड मिलता है, उस लिक्विड को हम लोग बायो ऑयल कहते हैं। सो ये जस्ट प्रोसेस फ्लो चार्ट है पायरोलिसिस का। हम लोग बायोमास लेते हैं, ड्राइंग करते हैं, ग्राइंडिंग, देन रिएक्टर में डालते हैं, वहां पे उसकी हीटिंग होगी, हीटिंग से रिएक्टर से गैसेस निकलेगी, साइक्लोन के थ्रू उसको हम लोग उससे चार अलग करेंगे, गैस निकल के हम इसको कंडेंस करेंगे जिससे बायो ऑयल मिलेगा, और गैसेस का हम लोग जो हॉट गैसेस है जिसको हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, उन गैसेस से हम वापस उसको ड्राइंग या हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देन पायरोलिसिस भी दो टाइप का होता है, स्लो पायरोलिसिस एंड फास्ट पायरोलिसिस। अगर हमें बायोचार अगर ज्यादा चाहिए तो हम लोग स्लो पायरोलिसिस करेंगे, अगर हमें बायो ऑयल ज्यादा चाहिए तो हम लोग फास्ट पायरोलिसिस करेंगे। और बायोचार भी एक बहुत अच्छा सॉलिड हम बोल सकते हैं, जिसको अगर हम अपनी सॉइल में मिलाते हैं तो सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, तो इसीलिए सॉइल अमेंडमेंट के लिए हम लोग बायोचार का यूज कर सकते हैं। Gasification. So gasification takes place by heating the biomass with limited oxygen to produce low quality value gas, or reacting it with steam and oxygen at high pressure and temperature to produce medium heating quality gases like H2CO. थोड़ा अमाउंट में CO2 भी आता है इसमें। So ये जो गैस निकलती है उसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, और फिर हम लोग गैसीफायर कैन वर्क
एट लो, हाँ गैसिफिकेशन प्रोसेस में ये इसलिए भी इसको अच्छा माना सकते हैं क्योंकि जो गैसिफिकेशन प्रोसेस गैसीफायर के थ्रू होती है। गैसीफायर को हम कम से छोटे स्केल पे भी गैसीफायर हम लोग कहीं पे इंस्टॉल कर सकते हैं और हम उससे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी बात है। तो ये उसका प्रोसेस फ्लो चार्ट है। सेम हम लोग बायोमास लेंगे, अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा तो हमको पहले ड्राइंग करनी होगी, साइज रिडक्शन, देन गैसीफायर में उसको डालेंगे जिससे हमें गैसेस मिलेगी, गैसेस को हम लोग प्यूरिफाई करेंगे, उसको अपग्रेड करेंगे तो लास्ट में हमें क्वालिटी फ्यूल मिल जाएगा। सो गैसिफिकेशन के डिफरेंट जोन्स होते हैं, 4 डिफरेंट जोन्स होते हैं जिसमें जो प्रोसेस होती है, कैसे कैसे हम लोग गैसिफिकेशन की प्रोसेस आगे बढ़ती है उसका ये दिया गया है कि गैसिफिकेशन में 4 जोन होते हैं, ड्राइंग जोन, पायरोलिसिस जोन, कंबशन एंड लास्ट रिडक्शन जोन। सो फर्स्ट बायोमास जो है वो ड्राइंग जोन में आता है, जिसमें अगर उसमें कुछ पानी होगा तो वो H2O, वहां से थोड़ा H2O रिलीज होगा। पायरोलिसिस जोन जिसमें ऑक्सीजन के अब्सेंस में हम उसको इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं बायोमास का, जिससे चार बनता है, कुछ टार गैसेस निकलेगी और थोड़ा सा लिक्विड। देन कंबशन जोन, उसमें हम थोड़ा सा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिससे H2O रिलीज होगा और CO2 रिलीज होगा। फिर ये फिर से रिडक्शन जोन में फिर से वो जो रेड चारकोल बना है उसके थ्रू पास होता है, जिससे रिएक्शन होती है, क्योंकि हमारा जो बायोमास होता है वो कार्बन उसमें ज्यादा होता है, इसलिए H2O और CO2 फिर से उसे रिएक्ट करेगी और हमें लास्ट में जो गैसेस मिलती है वो H2O और CO मिलता है। तो ये प्रोड्यूसर गैस है। सो जैसे मैंने डिफरेंट जोन्स बताए थे, वो लेफ्ट साइड में आप पिक्चर देख सकते हैं डिफरेंट जोन और उससे क्या क्या रिलीज होता है। ये इधर हमारा बायोमास है, सपोज ये दिस इज गैसीफायर, हमने बायोमास लिया फर्स्ट ड्राइंग जोन, जिससे हमारा जो ड्राई बायोमास उससे H2O निकल गया, लगभग 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्राइंग होता है। सेकंड जोन फिर बायोमास नीचे आएगा, पैरोलिसिस जोन, जो होता है लगभग 200 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ पर फिर कुछ एयर, टार गैसेस और फिर चारकोल बनेगा। देन हम कंबशन सेक्शन आएगा, जिसमें जो कंबशन होता है वो 800 से लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंबशन होता है, जिससे हमें हॉट रिएक्टिव चारकोल मिलता है। यहाँ पे H2O और CO2 रिलीज होगा। देन इन रिडक्शन जोन हमें जो कि 650 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, लास्ट में हमें H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी। सो दिस इज प्रोडक्ट फ्रॉम थर्मल कन्वर्जन ऑफ बायोमास। जैसे मैंने बताया कि बायोमास की थर्मल कन्वर्जन की 3 मेथड्स है, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस एंड कंबशन। सो गैसिफिकेशन से हमें क्वालिटी गैस मिलेगा, सिनगैस मिलेगा। पायरोलिसिस से हमें 2 प्रोडक्ट मेनली गैस एंड ऑयल मिलेगा, एंड कंबशन से हमें फ्यूल गैसेस मिलेगी। अब गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस से जो गैसेस मिल रही है उसको हम अगर प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करने के बाद उसका यूज पावर जनरेशन के लिए कर सकते हैं या केमिकल प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। सो बेनिफिट्स फ्रॉम बायोमास बेस्ड पावर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमें बायोमास बेस्ड पावर से। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन ऑफ पावर, क्योंकि हम जानते हैं बायोमास हर एक एरिया में आपको बायोमास मिल जाएगा, और ये बायोमास जो गैसिफिकेशन प्रोसेस है स्मॉल स्केल पे भी बन सकती है। तो इस प्रकार से जो गैसिफिकेशन प्रोसेस है कैन बी यूज्ड टू फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन ऑफ पावर। और ये जो टेक्नोलॉजीज है वो स्मॉल रूरल एरियाज के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, और रूरल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए भी ये हम बोल सकते हैं कि अगर हम लोग किसी एरिया में, किसी स्मॉल एरिया में अगर हम गैसीफायर कुछ अगर इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारे उस आसपास के जो लोकल पीपल है उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक साधन हो सकता है। So even though biomass gasification provides the various benefits and can produce power at small scale, the total amount of power production from biomass gasification in India is relatively low. इतना होने के बाद भी हम पता नहीं थोड़ा सा जो गैसिफिकेशन का जो हम लोग देख रहे हैं वो थोड़ा कम ही हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। सो करेंट चैलेंजेस, बायोफ्यूल प्रोडक्शन फ्रॉम बायोमास। So though biomass is an exhaustible resources, the sources of feedstock remains a primary challenge for biofuel production. The loose biomass is affected by moisture content, lower density and ash content. These results in lower calorific value and less efficiency. And the logistic का सबसे बड़ा problems है due to the highly dispersed nature of the biomass feedstock. Collection, storage and transportation of biomass from the field to the plant, thermal plant, could be very energy intensive. तो इस बात पे ध्यान देना है कि जो logistics है वो थोड़ा उस पे काम किया जाए. Then uneven distribution of biomass would significantly increase transportation cost and emission during the transportation. The storage of huge amount of biomass increase the cost of bioenergy production. So the cost of production could be main concern in the commercialization of this technology. गैसीफायर जिसका यूज हम गैसिफिकेशन के लिए करते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे कि
इसको चालू करने में लगभग स्टार्ट करने में ही लगभग आधा घंटा चले जाता है, और क्योंकि रॉ मटेरियल जो होता है बायोमास जो है वो थोड़ा बल्की होता है, तो इसीलिए हमको बार बार रीफ्यूलिंग करने की जरूरत पड़ती है उसको, ताकि वो कंटिन्यूअसली चलता रहे जो सिस्टम है. Then handling residues such as ash, terry condensate is time consuming and dirty work. Then driving with producer gas fueled vehicle required much more and frequent attention than gasoline and diesel fueled vehicles. So, and fourth limitation is obtaining the proper state of producer gas is a challenging task, because physical and chemical properties of the producer gas, for example energy content, gas composition and impurities, ये vary करती है time to time. High amount of ash and dust particle remains in the gas. Therefore, when it is used for engine, extensive gas cleaning is required. And last limitation, all the gasifiers have fairly strict requirement for fuel size, moisture, ash content. So improper fuel preparation is an important cause of technical problems with gasifier. So यहाँ पे अगर हम लोग ब्रिकेट्स और पैलेट्स का यूज अगर हम गैसिफिकेशन में करते हैं, तो ये थोड़ा सा जो फ्यूल साइज का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हम लोग थोड़ा उसको कम कर सकते हैं. And products like bio oil and biogas requires further catalytic upgradation to promote their quality to reach common fuel standards. Therefore, efficient catalysts are these catalysts are very costly. So industry normally इस type के जो costly जो catalyst है उसको use नहीं करती है generally. और there is a large amount of mineral acids is generated during the thermochemical conversion of the biomass. और therefore erosion का problem, corrosion का problem, system के अंदर erosion problem आ सकता है, ये सारी problems आ सकती है. So क्या क्या हमें जरूरत, किस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है? So more logistics and techno-economic assessment regarding different conversion techniques are needed to work out the optimal economic feasible methods for biofuel production. Also, to reduce corrosion problem, the reaction system for thermochemical conversion of biomass needs to be cleaned frequently after several runs. And for large scale production and wide application of biofuels, feedstock, pre-treatment, catalyst development, and as well as optimization of whole system is needed. So conclusion is that biofuel is undoubtedly one of the most promising fuel for our future due to its almost zero carbon footprint and endless feedstock resources. With serious concern, it is very important for India to start use of renewable energy sources and to explore sources that can bring power in distributed manner and on a small scale, so that over 60,000 villages that have no access of power can be benefited. And thermal conversion of biomass can be very useful, especially biogasification based power. ये बहुत useful हो सकता है इस type की problems को solve करने के लिए. Thank you. किसी के कुछ questions हैं तो? जी. 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 सर मुझे उतना कौन कौन इस टेक्नोलॉजी के मुझे उतना आइडिया नहीं है सर उस चीज का, मतलब उसको थोड़ा देखना पड़ेगा. हाँ बस. जी. 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 हाँ जी सर, वो मैंने डाला नहीं, मुझे थोड़ा और डालना चाहिए था. जी. जी. ओके. कौन सा? जी. यस सर. लेकिन फिर भी सर जो बायोमास का जो एनर्जी. जी.
यस सर। अभी इसको काफी चेंज आ गया है, 308 गीगावाट हो गया है। ओके। और अभी जैसे कि मैडम का है तो अपडेट हो जाएगा। जी जी जी। ओके। और सर एक इसमें 16 इंक्लूड नहीं है। जी जी यस सर। जी जी, इसमें 4 भी इंक्लूड 4 भी आएगा। यस सर। जी जी। रेसिड्यूज मीन सर बाद में सिर्फ एस बदलना है, उसमें एस जो है वो रेसिड्यूज होगा, उसका कुछ लेंथ। जी डायरेक्ट कंबशन, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट बर्निंग है। जी सर। जी 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 क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। जी सर पांडेन सर, बायोचार का कुछ आप बता सकते हैं क्या? कुछ ऐसे लिमिटेशन है कितना परसेंटेज हम लोग को फील्ड में 5? जी 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 सर, एक्चुअली हमने जी 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 यस सर। सर ये थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज कॉस्ट से रिलेटेड मैच है, तो अभी जी 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 यस सर।
फिर कॉस्ट का इनपुट, यस सर, कॉस्ट इकोनॉमिक्स, ओके, यस सर, जी, ओके सर। हेलो 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 सर, अभिनव सर, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए, म्यूट नहीं है। हेलो अभिनव सर, सर आपकी आवाज आ रही है, लेकिन हमें बस कैमरा नहीं दिखाई दे रहा, बाकी आवाज हेलो, आ रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपकी। अभिनव सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ अच्छा, हाँ सर, इस मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह? सर टॉपिक से रिलेटेड मेरा इतना ही कहना है, क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इतना ही कहना है कि ये वन डे वर्कशॉप रखा है पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिल्ड करने के लिए। जी सर। मैं बदरपुर में, और यहाँ पर 2 दिन से मैं यही देख रहा हूँ कि मुझे कोई समझाए कि मेरी जेब से कितना पैसा लगना है और मेरी जेब में कितना पैसा आएगा तो मैं पैलेट प्लांट लगाऊं। ये मुझे 2 दिन में अभी तक कुछ सुनने को नहीं मिला है। अच्छा, हम विषय से भटक रहे हैं। मुझे ये सुनना है कि पैलेट प्लांट में लगाऊं तो सर, क्यों लगाऊं? नहीं तो सर, ये जब कोई आ ही नहीं रहे। नहीं सर, अभी आ जाएंगे आपके पास सर। हमारे पास 2 बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पर, उन लोगों का अच्छा प्लांट है सर, और कहिएगा तो मैं उनसे आपको डिस्कशन करवा देता हूँ सर। हाँ वो उनको हाँ, ही, वो तो क्योंकि उनको सर ही विषय रखो। देखिए, हमारे पास जो ये नागपुर में बताए एक बहुत, सर प्लीज, नागपुर में हमारे पास बहुत बड़े सर ये पैलेट मैन्युफैक्चरर हैं, तो जो कि उनको सर करवा के दीजिए। नाम से मुझे हैं कितनी सर। जगह चाहिए, कितना प्लांट लगा, अपने बिल्डिंग लगाना पड़ेगा, उसमें कितना पैसा लगेगा, वो पैसा मुझे कितना लगाना है, मुझे बैंक से कितना मिलेगा, बैंक से क्या रेट में मिलेगा, फिर मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगा, और फिर मुझे एनटीपीसी में क्या रेट मिलेगा, और मुझे फिर कितना पैसा बचेगा। ये तो मैं प्लांट लगाऊंगा, नहीं तो क्यों लगाऊंगा? सर प्लीज 2 मिनट में वेट कीजिए, मैं आपको एक यहाँ पर कटारिया जी हैं, मैं उनसे आपको बात करवा देता हूँ सर। जी हाँ सर, प्लीज एक मिनट। नहीं है ना? हाँ सर प्लीज, एक कटारिया जी आ रहे हैं सर, प्लीज इनसे बात कर लीजिए सर। हाँ हेलो हेलो, जी जी भैया जय श्री कृष्ण। बताइए क्या क्वेरी थी आपकी पैलेट मैन्युफैक्चरिंग? बस क्वेरी तो ये है कि इस पैलेट प्लांट बिल्डिंग प्रोग्राम है, उसमें पैलेट प्लांट लगाने के बारे में कोई नहीं बता रहे। बाकी अभी तक जो सुने हुए हैं, सब कुछ वेबसाइट अपने इंटरनेट पे देखा हुआ है, वो सब बता रहे हैं। हमें सब कुछ पता है, बायोमास मिल रहा है वो, लेकिन अब पैलेट प्लांट लगाऊं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे कितना लगाना पड़ेगा, ये सब थोड़ी सी जानकारी मिल जाए। अब वैसे पैलेट का पैसा कितना मिलेगा वो तो पूरा एनटीपीसी के हाथ में है, जो एमओपी से आए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके हाथ में दारमोदार है कि वो क्या प्राइस ऑफर करते हैं। सेकेंडली जो इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल, मेरे ख्याल से जो शुक्ला जी ने दिए थे फिगर्स, वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है उससे, कि जो 2 टन्स पर आवर का जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर और लेस 3 to 5 करोड़ रहता है फॉर अ रिंग डाई प्लांट। इसमें इसकी टेक्नोलॉजी की रिस्क सबसे कम है वैसे आज के डेट में देखा जाए, कंसिडरिंग जितना एक्सपेरिमेंट हुआ है इस पे। बाकी ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं, जैसे एक अपना फ्लैट डाई वाली है और एक ब्रैकेट मशीन से जो आप ऑलरेडी ट्रायल ले रहे हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कम रहेगा एंड ओवरऑल कॉस्टिंग भी कम होगा। ट्रायल टेस्टेड नहीं है, मतलब मैं आज उसको वाउच नहीं कर सकता, बट वो टेक्नोलॉजी है, लोग बना भी रहे हैं, आप उनमें से एक हो, मेरे को मालूम है, तो उस पर शायद आप थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे। बट बाकी
लैंड रिक्वायरमेंट आपको कम से कम 4 से 5 एकड़ तो बेर मिनिमम लगेगा ही लगेगा टू पुट अ पेलेट प्लांट, क्योंकि आपको बायोमास प्रोसेस करना है और वॉल्यूम डेंसिटी बहुत कम होती है बायोमास की, तो एरिया बहुत ज़्यादा लगेगा। एंड लैंड एंड बिल्डिंग में भी करीब करीब आप समझिए कुछ नहीं तो 1.5 से 1.25 करोड़ तो बेर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जाता ही जाता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कॉस्ट होती है पूरा प्लांट को फ्लोरिंग करने की, क्योंकि बायोमास को आप ओपन ग्राउंड पे नहीं रख सकते, मिट्टी मिक्स हो जाएगी तो ऐसी क्वालिटी खराब हो जाती है। सबसे 2 क्रिटिकल टन पार्ट पर होता है आवर उसकी का कॉस्ट प्लांट बहुत ज़्यादा है। पूरा टोटल कंप्लीट कितने में लगता है? पूरा प्लांट लगेगा कम से कम आप समझिए 2 से 2.5, जो शुक्ला जी ने पूरा प्रोसेस बताया था उनके स्लाइड में, अगर जो सबने इंक्लूडिंग लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी सब कुछ नहीं, वो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट बता रहा हूँ फॉर 4 to 5 TPD। मैं इसलिए तो फिर लैंड और बिल्डिंग मोटा मोटी कितने का पड़ेगा? लैंड बिल्डिंग डिपेंड करेगा कि आप कौन से एरिया में ढूंढ रहे हैं। लैंड को छोड़ दीजिए, बिल्डिंग कितना पड़ेगा? बिल्डिंग आज के रेट में 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट आती है एवरेज में, जो लैंड बिल्डिंग आप बनाते हो। इसमें आवश्यकता कितनी होगी मोटा मोटा ये पूछा? हाँ जी, इस पेल प्लांट में कितना आवश्यकता होगी? स्क्वायर फीट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी? आप इसको वैसे तो 10,000 स्क्वायर फीट में भी लगा सकते हो मशीनरी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 10,000 के हिसाब से 1 करोड़ का बिल्डिंग हो गया, बाकी की मिला के 25 सवा करोड़ का कुल मिला के हो गया। ये बहुत ज्यादा वेरीड है, मतलब आप बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग बेर मिनिमम 20,000 स्क्वायर फीट पकड़ के चल रही है, वही हिसाब से मैंने 1.5 से 1.25 करोड़ बोला, क्योंकि बिल्डिंग की भी कॉस्ट करीब 800 से 1000 रुपए के बीच में वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। और कोई क्वेरी है आपको मुकेश भाई? हेलो, कैपिटल कॉस्ट कितना चाहिए? कैपिटल कॉस्ट किस में? प्लांट के लिए 2 टन पर आवर का वर्किंग कैपिटल कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा लगता है, करीब आप समझो जितना प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग में लगेगा उतना ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको रॉ मटेरियल में भी लगेगा, क्योंकि पूरे साल का रॉ मटेरियल बायोमास आपको प्रोक्योर करके 2.5-3 करोड़ रुपए लगेगा। हाँ, अगर जो आप 4 to 5 टन पर आवर की प्लांट लगा रहे हो या 2 टन पर आवर का भी लगा रहे हो तो प्रोविजन आप कभी भी ज्यादा रखोगे। मतलब बेसिकली 2,500 से 3,000 रुपए मल्टीप्लाई कर लो जितने टन का आपका प्लांट है इंटू 12 महीने, या एटलीस्ट 7 महीने तक वो करना ही पड़ेगा, 7 मंथ्स तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बारिश का है। हाँ, 6 करोड़ रुपए कुल मिला के प्लांट कॉस्ट है सब मिला। हाँ ठीक है, उसमें फिर रेट क्या मिलता है, उस हिसाब से आउटपुट क्या है, मार्जिन क्या है, ये जानना चाह रहा था। एनटीपीसी चलो छोड़ो, लेकिन अपने एनटीपीसी ने भी रेट निकाला है 1.78 का रुपी पर किलो कैलोरी। आप उसके हिसाब से करोगे तो कुछ कॉस्टिंग नहीं बैठती वैसे तो, बट अदरवाइज ओपन मार्केट के प्राइस जो हैं, जो शुक्ला जी ने बताया, इट वॉज अगेन वेरी रेलिवेंट। 6,500 रुपए के करीब का प्राइस रहता है, तो आप समझ लो 2,500 रुपए का रॉ मटेरियल, 2,200-2,300 रुपए का आपका कन्वर्जन, शुक्ला जी ने वही बताया था ना। हाँ, 4,800 हो गया। जीसीबी कितना होगा उसमें? 3600-3500 करीब उसके ऊपर। तो उस हिसाब से जीसीबी का रेट कितना पड़ना चाहिए? मोबाइल तो पर आप डिवाइड कर लीजिए, मोर और लेस नहीं ज्यादा जाना चाहिए, कम से कम 2.2 रुपी पर किलो कैलोरी इज दी राइट। ये फैक्ट्री रेट है? हाँ, ये एक फैक्ट्री रेट है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट हटा के। तो ट्रांसपोर्ट और टैक्सेस जोड़ने के बाद में तो फिर ये 2.5 रुपए के आसपास में पड़ेगा फिर? हाँ, पड़ेगा 2.5 रुपए के आसपास ही पड़ेगा, 2.4 से 2.5 के बीच में आइडियली आता है। तो फिर ओपन रेट एनटीपीसी ने तो निकाला हुआ है 2 के अंदर, शायद निकाला हुआ है। हाँ जी, 1.78 2 रुपए के अंदर निकाला हुआ है ना।
हाँ जी, हाँ जी। तो वायबिलिटी नहीं है क्या? वायबिलिटी होगी अभी, मतलब उसमें न्यू प्रोजेक्ट है, उस पर वर्किंग स्क्रैच से करनी पड़ेगी। थोड़ा वो लोग आगे आएंगे, थोड़ा हम लोग हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे तो कॉस्टिंग बैठाएंगे धीरे धीरे। नहीं तो वायबिलिटी अभी सीधी वायबिलिटी दिख ही नहीं रही है, अभी प्रॉफिट तो इसमें जोड़ा ही नहीं है। हाँ, तो फिर प्लांट क्यों लगाए कोई? एनटीपीसी देगी प्राइस, यही होप में बैठे हैं सब लोग कि थोड़ा प्राइस इंप्रूवमेंट होगा एनटीपीसी के नीचे। थोड़ा बहुत अपने को अपना कॉस्टिंग पे वर्क करना पड़ेगा, मोर और लेस तो प्राइमा फेसी वही दिखता है। अभी वायबिलिटी नहीं दिख रही है कुल मिला के। अभी एग्जिस्टिंग में जो रेट्स आए हैं उसमें तो स्कोप ही नहीं, मतलब अप्लाई करने का भी कोई तुक नहीं बनता। चलो ठीक है, धन्यवाद जी कटारिया जी। हेलो 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 मुकेश जी, हेलो 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 मुकेश जी, एनी अदर सर? और कोई डाउट है आपका? हेलो सर, अगर अभी कोई डाउट है तो हमारे प्रकाश राव साहब बैठे हैं यहाँ पर सर। चलिए कोई डाउट नहीं, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट सर का एक चलिए, थैंक यू कटारिया जी, आपने पूरा कैलकुलेशन कर दिया। हाँ इन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिए थे सर। नहीं सर, मतलब मेरा ये था कि पहले इसका बेसिक हम ग्राउंड कंप्लीट करें, बिल्डिंग को बाद में बना ही लेंगे। बाद बिल्डिंग बनाने के लिए तो राव साहब और कटारिया जी हैं ही सर, हमारा बेसिक ग्राउंड कंप्लीट करना था।
आपके पास लेजर पॉइंट्स होती है, लेजर पॉइंट है क्या? कोई नहीं, ठीक।
टेक केयर कर पाए आगे राइट फोरम तो कंसर्न है लेकिन मुझे आप लोगों से भी और आप लोगों से कि एज ऑफ नाउ Shall I start?
Very good afternoon to all. I understand that all of you must be hungry, and kindly bear with me 10-15 minutes. I will try to wind up. And to myself, Pandian, working as a scientist in Engineering Training Center, ICR Sircard. Today I am going to present on the topic agro residues in biofuel production, a global perspective. Hello. हाँ उसी ये कोई भेजना वापस ना. हाँ वही हाँ बस इसको सेंड कर दीजिए. स्पीड पोस्ट कर दीजिए, नॉर्मल डार्क से कर दीजिए. हाँ एनटीपीसी कोरियर कर दीजिए. हाँ हेलो, काइंडली म्यूट करिएगा जो भी है. Okay. Yes, today I'm going to present on the topic agro residues in biofuel production. Before going into biofuel, just I give a brief introduction on petroleum-based fuels. Throughout the world, most of the transportation and all the oil industries mainly depend on the petroleum oil, and almost more than 70% of the consumption is transport sector is consuming around 70%, more than 70%, and it is likely to increase during this 2070 to 80. And particularly India also importing the crude oil to meet its demand, almost more than 70% of its demand. Further, when we use the transportation fuels, particularly the petroleum fuels, it emits most of the greenhouse gases, particularly methane, carbon monoxide, and chlorofluorocarbons, which also create a problem of global warming, which is a great concern in the coming years. And these gases are predicted to rise approximately 43 billion metric tons by 2040. Further, the fluctuations in the crude oil, we can see in the graph that how the crude oil is getting fluctuated. During 2010, it was on the higher side, around 160 to 180 $1 per barrel. But immediately during 2016, 17 or 18, it has fallen down to the $20 per barrel. Now, almost for one and a half years, it is on the increasing trend to $68 per barrel. So it is an unpredictable that how the crude oil prices will be there. Further, it is on the increasing trend because the fossil fuels will not be the renewed material, so continuous depletion will create an increase in the prices. Also, the global warming, which necessitated to look for the alternative fuel that can be addressed by the biofuel that is originated from biological resources. This table, it is too much, just I will brief you. Production and consumption of fossil fuel around the world as well as the India. And the present blending, that is E5 means ethanol 5, means 5% blending, 10% blending. Throughout the world, United States and European Union, we can see that the global share on the oil consumption and global share in the oil production, it is almost at par with the United States and European Union. They are able to produce as much they consume it, but as far as India, it is consuming more, almost 5% global share in the consumption, but the production is only 1%. Also, 10 years ago itself, before itself, these countries, those developed countries, has started producing the biofuel so as to meet the transportation requirement, transportation demand in the coming years. We can see in the box given in the table, it is biofuel production. Particularly United States and Brazil and European Union, they have come up with a good amount of biofuel production, but India is far behind from these countries, and the global share of biofuel is only 0.6% of the Indian share. So before going in detail, I just give a brief introduction. What is biofuel? Biofuel is it is a kind of energy fuels derived from the biomasses that can be cultivated and over the period of time. That will not get depleted in the period. Biofuel of three types. One is bioethanol, another is biodiesel, another is biogas. Bioethanol mostly produced from the fermentation of sugars and sugar crops, and the biodiesel is produced from vegetable oil and reused wax and fats. These will be transesterified into the biodiesel, and biogas particularly produced through anaerobic fermentation of biomasses through microorganisms.
in biofuel there are four different types of generations are there. First generation initially came during 2000 periods, that is mainly from sugarcane juice, sugarcane molasses, and soybean oil, that is biodiesel, and corn. These 3-4 agricultural, I can say it is a food grains. It is not a residue. It is a food grains were used for production of ethanol, which was giving a problem of food and feed battle, because whatever the materials being produced for food grain was diverted for production of biofuel, which almost created the demand for food demand. Ultimately, it resulted in the price increase in the price of food grains. So they have switched over to the second generation biomass. They have think that we can use the biomass which is of not used for feed as well as food. So there comes the agro residues which are having no use, and particularly agro residues as well as the wood biomasses. These biomasses will be converted biochemically and thermochemically into the biofuels, particularly bioethanol and biodiesel. After that, it came a third generation. In third generation, no agro residues, no food grains will be used here. Particularly the microbial biomass. It is called as algae, macroalgae and microalgae. These two algae, what it does is that it produces the fat by using the light as well as the water. These reserved materials can be converted into bio oil, particularly the biodiesel. And then after seeing the potentiality of the third generation biofuels, the team has started working on the fourth generation, in which whatever the potential of the algae are there, that can be multiplied to the fourfold or fivefold through genetic engineering, so that we can harvest high amount of energy and we can fix high amount of carbon into the biomass. Ultimately, it will result in the high biomass yield. So these are the four different types of four different generations of biofuel. To the knowledge, I just must tell here that throughout the world, still now the first generation biofuel is the successful one. I will tell you in the detail in later slides. And second generation biofuel, it is otherwise called as cellulosic ethanol. That is still in the pilot scale, and India is also in the way of promoting the cellulosic ethanol in the coming years. Here I have depicted the overall diagram, how the process takes place and what happens. The feedstock, particularly the agro residues, will be of lignocellulose. I will explain you later. Lignocellulose that will be converted into bioethanol and lipid, and that will be converted into alkane terpene that will be blended with the fossil fuels. Here the emission is less. It doesn't mean that it will not pollute. As Dr. Shukla sir said that it is also create pollution, but the advantage is that whatever the carbon dioxide is being emitted to the atmosphere, that will be refixed through the plant biomass into the body itself. So whatever the carbon dioxide released, again it will be refixed. But in case of crude oil, whatever the carbon monoxide is released to the environment, there is a less chance that those carbon dioxide will be recycled back into the plant systems. That is the only difference. So we have seen that second generation biomass is having the boom. Just we'll have a look at into how much availability of crop residues in the world as well as in India. This picture depicts the availability in India itself. I have shown that in India, rice straw, wheat straw, and sugarcane bagasse. Fourth is cotton. These four agro residues almost ruling the major agro residues in the country. 33%, 20 and 55, and 60 to 70 to 80%, 70 to 80% of the total agro residues are originating from these four biomasses. Sorry, here the slide is So total crop residues in India, according to 2021 report, it is around 682 million tons of agro residues are being produced in the country, in which 178 million tons is surplus out of using the feed, other uses. These million tons of agro residues are surplus, which is equivalent to 51 billion liters of ethanol production. And maximum agro residues are being produced from rice straw, as I mentioned, 220 to 25 million tons, in which 43 million tons is surplus. And minimum is from castor, that is 4.6 million tons. So this picture depicts the availability of agro residues in different states. We can see that the total dry biomass available is mostly from Andhra, Telangana, Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat,
Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh, Bihar. These are all the major states which is having surplus amount of agro residues. And the right side pictures indicate the surplus biomass available. Again, it is that Hyderabad, Andhra, Telangana, Maharashtra, Gujarat, part of MP, Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh. These 6 states is having the surplus quantity of biomasses. If any plan to be established in the future, it would be much helpful to establish in those regions so that they will be able to get much amount of agro residues in and around the plant. Residue burning already has been discussed much. Residue burning is not only polluting the air, as well as it is also depreciating the quality of the soil, because whatever the biomass ingredients are there, particularly carbon, nitrogen, phosphorus, these are not coming from air except carbon. All the nutrients is been taken from the soil. If we burn this biomass there itself, all the nutrients will be taken away. Again, we have to feed the soils with those nutrients. Also, the volume of air pollutants, methane, nitric oxide, sulfuric oxides, all the pollutants will pollute the air quality, which we are witnessing nowadays. So, lignocellulosic biomass, I already discussed. It is having of 3 components: lignin, cellulose, and hemicellulose. Cellulose and hemicellulose comprising around 70% of the total biomass of the plant. Suppose if you take 100 gram of biomass, 70 gram is cellulose. Cellulose is nothing but it is a complex chain, poly chain of sugar. If you break the chain into the sugars, that can be converted into biofuels. So here this table shows that how much composition of cellulose and hemicellulose are available. Here I have shown the agro residues and their bioethanol potential. We can see that rice straw, wheat straw, and sugarcane bagasse. If you suppose supply 1 kg of dry biomass, we can able to get around 0.5 liter of ethanol in the plants. Bioethanol production involves 3 steps. One is pre-treatment. Pre-treatment is a very important step because the biomass itself is made up of cellulose and lignin. Lignin is the one material which hinders the breakdown of sugars into simple sugars. So first we have to pre-treat so that lignin will be broken down. All the sugars will be converted into sugars. Further fermentation will be takes place to convert into ethanol. Once ethanol is made, distillation will be done to purify the ethanol. This is the process: pre-treatment of the biomaterial and hydrolysis. Fermentation will takes place, distillation and dehydration. The hydrolysis takes in 2 steps. One is acid. We can use mild dilute sulfuric acid for hydrolysis. Also, we can use enzyme. Enzyme is preferred because of low energy consumption. Also, the other inhibitory compounds will not be generated when we use the enzymes. These are different methods of bioethanol production because these 3 steps are common: pre-treatment, saccharification, otherwise called as hydrolysis, and fermentation. They have different combinations. They do pre-treatment alone and saccharification fermentation together. So they can do it 3 at a time so that they will get higher yield of sugars. So this is bioethanol production status throughout in the world. As I mentioned in the first slides, the USA, Brazil, and European Union, these 3 continents play the major role in the production of bioethanol. India is still far behind from these countries. Next, biodiesel. Biodiesel, there are 2 different substrates are there. One, plants can be used for biodiesel production. What happens? The seeds which is having the oils that can be extracted. Those oils will be refined. They will be mixed with the alcohol so that it will be esterified into biodiesel as well as the glycerol that can be used for the fuel. Another one is algae that I have mentioned, microalgae and macroalgae. What it does, by using sunlight and water, it will fix the carbon into the biomass, that is fat. That fat will be broken down, that will be taken into oil, that can be converted into glycerin as well biodiesel. Those biomasses which is available left over after extraction of oil, that can be used, that is made up of fully starch and protein, that can be used for other supplements. So leading countries for the biofuel production, biodiesel production, again it is the United States, Brazil, Indonesia, Germany. These are the 4 countries which is having higher production of biodiesels.
major companies and their commercial plans for biofuel production. As I mentioned, still the second generation, that is cellulosic ethanol, is still in a pilot plant, but somehow 1 or 2 plants in the US. Particularly most of the plants are established in the US because that was the leading producer in bioethanol. We can see most of the companies are focusing on bioethanol, 1 or 2 on biodiesels. They are for animal fats, corn oil, and vegetable oils. Rice and wheat straw, this is for bioethanol. Only 1 or 2 cellulosic biomass, 1 or 2 firms which is focusing on second generation bioethanol. Third biofuel is biogas. As we already know that biogas, how they're being generated. It is on the anaerobic fermentation. The microbes will produce the methane gas. It is composed of 55 to 75% of methane gas and carbon dioxide 30 to 45%. These biomethane can be used as a used fuel, as gas grid, and heat and electricity. And these digested can be used as a fertilizer or a soil improvement soil fertilizer. Leading biogas producing countries in 2014, I couldn't get the recent data, even though it is from 2021, but I couldn't get the data for recent. So even then, it is China is the first leading one, and followed by United States, Thailand, and India is the 4th one, which is producing biogas in a quite numbers. So in India, Maharashtra is the leading state which is producing higher quantity of biogas, and the least is Odisha in this. Sorry, that figure is not there. So 2020 ethanol export, India is producing first generation ethanol, but it is not able to meet its own consumption, domestic consumption. Still India is importing ethanol, that is otherwise called as gasoline and fuel ethanol. Gasoline is used for industrial purposes and fuel ethanol is used for transportation. To meet out the gasoline, means industrial purposes, India even itself couldn't able to produce that much ethanol, first generation ethanol. Almost 14% of ethanol is being imported from US. So first years Canada is importing 24%, 15% Brazil, and India 14% from US. Yeah, blending of ethanol with petrol, the bioethanol. Finally, the objective is that the ethanol to be blended with fuel, fossil fuel, so that the dependency on the fossil fuel to be reduced to the number of in the coming years. So major blending mandates in the countries such as US, China, and Brazil, they have the blending mandate of 15 to 27%. Also, they have achieved also it. And Brazil, this is the only country which is blending the ethanol almost to the 100%. Most of them are 85% ethanol, and in some places they are using 100% ethanol for the fuel. In Germany, E10 means 10% ethanol blending. They are doing it, but in India, in condition to India, we have target in the 2010 for 5% blending, but we couldn't able to achieve in the complete way. Now the national policy on biofuels 2018 has come up, which is approved by the government, that envisages that indicative target of 20% blending of ethanol in the petrol and 5% blending of biodiesel in the diesel in the coming year 2030. For that, they have made some salient features, as I mentioned, 20% blending and 5% blending, and they will be categorizing basic fuels and advanced fuels. First generation will be called as basic biofuels, advanced will be second generation, third generation biofuels. Also, they are going to develop a national biomass repository for analyzing all the agro-residues data. And setting up of National Biofuel Coordination Committee under Ministry of Petroleum, Natural Gas, and Working Group on Biofuels will be developed. This is the Indian trends for gasoline as well as fuel ethanol status in India. India's production is not striking out over the period of 10 years. We could not see that India is producing higher quantity, but even though it is in the higher side, but it is not significant. But if you see that energy fuel consumption is keep on increasing, but we are not able to producing that much, hence that's why we are importing this ethanol. And here also we can see ethanol fuel consumption and gasoline consumption, both are in the increasing trend. So it is an alarming situation that we should focus on production of bioethanol either in first generation or second generation. That potential cellulosic ethanol production after implementation of 2018 policy, it is projected that almost 1.1% of Indian gasoline requirement will be met by the production of bioethanols. But there are issues in production of, sir, only 2 more slides, I will finish it. So still there are issues in 2G ethanol production. One is that major companies, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum,
Hindustan Petroleum, they are very reluctant to put a leg on second generation ethanol production because they feel that it is more expensive. It is true also, it is more expensive. We can see that setting up a 1-2G plant, it will cost around 1,000 crore. While 1G plant, that is directly from food grains into ethanol, that will cost around 100 to 200 crores. Ultimately, they will go for the cheaper one. But India has to focus, because if the sugar is converted into ethanol production, the problem is with the food grains. So we have to promote anyhow the cellulosic ethanol, because we have surplus amount of agro residues in the country. So for that, Indian government is now trying to scale up the cellulosic ethanol by providing viability gap funding, which improves the financial returns of a given project. Further, Indian government has proposed a cap of 1.5 million rupees per project, a total of 12 projects at commercial scale. Here you can see I have taken 3 biomasses, major biomass as I discussed: rice straw, wheat straw, and sugar cane. This is the rate, average price per ton of biomass: 3,500 for rice straw and wheat straw, and 2,200 for sugar cane bagasse. If it is procured, it is having the ethanol yield, as I mentioned, 0.38 to 0.4 gram per gram. If it is taking kg, 0.4 liter per kg of biomass. Assuming that it is having 15% moisture and it is having 40% moisture, will it be viable? Just we will see that. These are the cost involved in installing the plant, two generation ethanol plant. Capital cost around 876 crore. Capital cost, and fixed cost around 194, 200 if we imagine. These two together, it cost around more than 1,000 crores if we establish a cellulosic ethanol plant. And variable cost also coming around 100 crores. So because of this, most of them is neglecting, or they are reluctant to enter into the second generation biofuels. Here, suppose if we install a plant of 36.5 million liters per year capacity plant, that I have mentioned 1,100 crore, the fuel price, what would be the fuel price? So around it is 93 rupees per liter. If we install 70 million liter per year capacity, it is around 80 rupees per liter. So will it be economical? It is no, because India has fixed ethanol price in India. Even after importing the ethanol, it has fixed around 62.65. This is first generation bioethanol. So anyhow, we have to meet the first generation bioethanol price by using the cellulosic biomass. For this, government is taking the policy measures. It has to provide a per liter subsidy for cellulosic ethanol so as to meet the first generation bioethanol prices. Then only the firms can enter into the biomass second generation bioethanol production to earn a profit. And subsidy amount of 20 to 35 rupees has to be given per liter to meet the first generation, as I mentioned. Through viability gap funding, if any firm is not getting the funding, we have to give the subsidy for them and increase the level and scale of viability funding program. And we have to provide low interest loans to the cellulosic ethanol producers and exempt any import tariffs on equipment or any other chemicals purchased from them. Finally, we have to provide the financial and technical support to scale up the collection of agricultural residues, because that is also a major hindrance to higher prices for agricultural residues and building necessary infrastructure. Thank you, sir. Yeah, sir. Very nice, sir. ठीक है. जी. अभी हमारे अग्रवाल साहब